Bachelor's of Arts from RAK College of Nursing, University of Delhi. She completed her PhD from IGNOU as a first scholar. Madam has worked in various positions in RAK College of Nursing from year 1970 to July 1996. She is also a life member of various nursing societies and associations. She has also consulted a Family Health Intervention 360 organization, that is FHI, Education Consultant of India Private Limited, that is EDCIL, WHO, UNICEF as well, in various areas of nursing. Just hold on for a second. She is a nursing professional who believes in lifelong learning. Due to her dedication towards continuous learning, she was awarded President Gold Medal for MSc Nursing. She not only proved her excellence in India, but also made India proud by representing our country in abroad for WHO fellowship in Bangkok on rational use of drugs. Recently, in the year 2020, that was the year for nurse and midwife. Professor Bimla Kapoor Madam was nominated one among 100 outstanding women nurse and midwife leaders under the category of Innovation, Science and Health from India by Women in Global Health. She was also awarded the Lifetime Achievement Award by the Nurse Scholars Society in the year 2021. She also received the award for being the best nurse on 12 May 2022 on Nurses Day, conferred by Nursing Scholars Society as Patron's Honor. Heading towards her achievement, Madam is the first nurse author to publish a textbook of psychiatry nursing. Madam has established Delhi Nursing Council and elected as the first president over there. She had started PhD nursing, diploma courses in nursing administration, and implemented BSc nursing nationally and internationally in Nepal, Seychelles, and Doha. She also launched many programs for doctors, nurses, and paramedical professionals through distance education. Dr. Kapoor has been a prominent member among the nursing profession throughout her career. She has emphasized the quality in nursing education, clinical field, and in the field of research as well. I am assured, knowing all about her, our viewers are now eager to hear from you. So I hereby request you to address the audience. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you so much, Dr. Vandana, for such an elaborate introduction. Am I audible? Can you hear me? Yes, ma'am. Probably you have to take off this back drop, which you've got over here. Okay, right. Fine. Am I visible? Yes, ma'am. Clearly. Okay. It is a great privilege to be amongst all young people who are really heading towards and are the leaders of the country, especially Dr. Rupa Verma, principal of the MKSS College of Nursing, and her faculty, who has tried to organize the Schizophrenic Day, World Schizophrenic Day, along with the Nursing Teacher Association of India under the leadership of Dr. Farooq Khan and Dr. Manish, who have really worked very hard. And I'm
always talking about that this is the first Nurses Teachers Association. We didn't have any forum or any platform to talk for the teachers. And I'm always proud when I met Farooq in Delhi, when, he visited me, and I was really impressed. And I'm so happy that you are again giving importance to a lot of academic activities. Dr. Vikram, who is, of course, the panelist, Mr. Pankaj, Dr. Vinu Matthew, proud of you. I'm indeed happy also to be part of this, webinar, a panel discussion, maybe as a keynote addressee. But still, to feel that you are part of it, it reminds you so many things of the mental health nursing and the work you are able to learn and do. So that's what is very great about, going through the nostalgia of, how we have developed as a second, we were the second batch of the nursing students in the country who visited NIMHANS. There was one senior batch than me, and there was no facility otherwise in Delhi to learn about the mental health psychiatric nursing. And today we are able to talk about mental health psychiatric nursing in every nook and corner. Being myself as a mental health psychiatric nurse, educationist, researcher, administrator in nursing, I feel, that we need to talk holistically. And Dr. Rupa very clearly said that, ma'am, talk about the nursing aspect. And she knows that I'm so passionate about nursing, because Rupa has made the thing very easy, because she has given a very good introduction about the schizophrenia, and how do we celebrate this day. But according to WHO, we know that schizophrenia is a very serious illness. And you also know that the disability certification is being done by certain countries. WHO says that more than 21 million people worldwide are affected with schizophrenia. That is a magnitude of a problem, which, it's very unfortunate that mental health and illness was not given that much of importance. God forbid we shouldn't have any more pandemic, but this mental health of people, managing the mental disorders, talking about mental health policy, talking about the National Mental Health Care Act, it is getting a momentum now, because people feel that it is the mental health of the people which was getting affected more other than the physical health. The phobia, the anxiety, the stress, the family loneliness, the depression which people went through the pandemic, and the health professionals like doctors and nurses went through it, was tremendous. And so the country and the world has geared up to talk about the mental health and mental disorders. But today being the schizophrenic day, I will highlight about the schizophrenia more. We also know that schizophrenia occurs in all types of societies and all places in the world. If you take, it varies from 0.3 to 1% of people who experience the schizophrenic kind of symptoms once in a lifetime, Now, how it is handled depends upon the mental makeup, personality development of the individuals. Though it is found rare in children, but it varies between 15 to 45 years of age with a peak age of 30 years. The parameters keep changing depending upon, that how people are taking the problem. See, incidence of male, female is almost similar. So to classify gender wise, some people say in males it is more, but it is, almost similar. Also, you'll find that the studies have shown that socioeconomic status people who are little lower in their socioeconomic status, they are more prone to getting this, because it's a life you want to meet. As for the hierarchy needs of Maslow, you want to need your basic needs first. If the basic needs are not met, how can you think about the mental health and other things? So those could be some of the contributory factors which leads to the socioeconomic factors also. And we know that in India, we have more than 1.2 billion population. The schizophrenia is 3 people amongst 1,000. And that's a huge number we have. Diagnosed, not diagnosed.
reported, not reported, is a very, very significant attribute we have to consider when we are talking about the epidemiology or statistics of having schizophrenia in our country, you know. Well, I think she highlighted, Dr. Rupa Verma highlighted the purpose of this day, 24th May, to celebrate the World Schizophrenic Day is, of course, to create awareness about the illness and eradicate the misconcepts, eradicate the myth about mental illness in general, but definitely it is a celebrating the World Schizophrenic Day. Now, I think very well, Dr. Rupa Verma mentioned about Dr. Philip Pinner, but let me also tell you that Dr. Emil Kraepelin was the person first who actually found out the symptoms. But in 1896, sorry, but he classified it, giving the clinical description as dementia precox. He did not call it as schizophrenia. But then he mentioned about three major schizophrenic disorders as hebephrenic, catatonic, and paranoid. Whereas from there, Bleuler picked up. And you know, Bleuler has mentioned primary symptoms of schizophrenia and the secondary symptoms of schizophrenia and how we should handle, you know, primary 4 A's and the 5th A's as did as, auditory hallucination. So Bleuler described a fourth type of schizophrenia, which was considered called as a simple schizophrenia. So the actual tick mark was done by Kraepelin to mention about dementia precox, but not schizophrenia, and Bleuler classified it as a schizophrenia. But the day is celebrated, as very rightly said by Dr. Rupa Verma, the day is celebrated in honor of Dr. Philip Pinel because, you know, if you go back to the historical development, which I don't want to say, patients were changed. He mentioned about humanizing, he practiced humanizing the care or human behavior towards the patients with schizophrenia. And that was a landmark which clicked everybody, and people started celebrating this day as to remember Dr. Philip Pinel as a schizophrenic, World Schizophrenic Day. So this is very, very significant. While, you know, you can see that the attitude of people is changing. We won't say that. People, let's talk. Very well said, chalo baat kare by Rupa in a very casual manner. But look at the significance of it, you know. People have started talking about it. Chalo, people are doing chalo baat kare. You imagine the celebrities coming up, talking, Deepika, other people, they're talking about their depression, they're talking about their mental health problem, people who are losing their life because they went into the extreme and committed suicide and all that, you know. So this has got a lot of impact on the awareness of people, you know. People are able to understand that. Let's talk about it, you know. Let me talk about what's going on with me. Is it something serious, or it is just the anxiety spell I'm going through, you know? So I have seen in one of the OPD in one of the hospital when I was discussing with the principal and standing out, and I found that there were a lot of patients outside the psychiatrist clinic than the orthopedic and other places. So I asked the psychiatrist, I said, you're getting a lot of attendance. He said, ma'am, there is a lot of awareness of people, and there are corporate sectors, government sectors, people are under pressure, and they really come for early intervention. That is a very healthy sign, and that's important. Let us talk about it. Chalo baat kare. I like the slogan which she is talking, Rupa mentioned in Hindi. Now, the key facts are that schizophrenia causes psychosis, definitely, and is associated with a lot of disabilities. That is why disability, you know, certification is being given to the patient, and India also gets into it, you know. It does affect areas of life, including personal, family, social, educational, and occupational functioning. Now, if this is getting affected, naturally, the person is not able to adjust in life and manage the life well. And that's very significant in case of schizophrenia. Of course, mentioned by all the people, there is stigma, there is discrimination, there's violation of human rights while dealing with these patients because they say, "Are to mentally ill hai." The ye isko kya hai? You know, they will pull by the ear. I've seen
In many hospitals, let them call them so many modern hospitals, but you will find still, the patients are not given the clothes. They are roaming around naked and all that. I mean, even the dignity of the individual is not maintained. And that's where the discrimination and violation of human right is very, very painful. We need to really talk about it. We know that more than 2 out of 3 people are suffering from, psychosis, but there are hardly any people, there are hardly any specialists who are able to reach up to them and give treatment. I think Dr. Vikram will talk about it, that we are very scared, we are very worried that the people who are MBBS, MD, they prescribe the medicine. Here, Alprax is, prescribed by everybody, but they are not talked about these side effects which it would have. Whereas psychiatrists will use caution, even increasing or decreasing the dose and, spacing the dose, withdrawing the dose. So those are some of the things which we need to really take care of it. See, there are a range of effective care options available for schizophrenia, but the WHO feels that do we want to say that the patients will recover completely? WHO mentioned the fact is that 1 out of the 3 people at least have a chance to recover as much towards normalcy as possible if reported on time, if intervened in time, if treated in time pharmacologically, and given interventions by the nursing people and followed up for the rehabilitation by the nursing professionals, because we do not have other category of professionals who are there in the community to follow up the patients who are having the psychiatric knowledge, the nurses who are having the psychiatric knowledge. So to me, the mental health psychiatric nursing professionals play a very important role as a team member. This is one care area where the team works together. If you all know biliotherapy, it is based on the teamwork. And mental health psychiatric program for the patient is with the team. The doctor prescribes the drugs, okay. The nurse takes on and carries on the interventions based on the nursing diagnosis. The nurse diagnoses the patient. Nursing diagnoses are based on the mental status examination which nurse does, whether it is an elaborate mental status examination or mini mental status examination. See, the mental status examination doesn't need to be done every day, but alternate day or after the ECT therapy, or maybe, if you find the patient is showing the symptoms, then you can reduce it to once in a week, twice in a week, depending upon the condition of the patient. So nurse makes a nursing diagnosis based on the mental status examination, the history she or he takes, and also the psychotherapy, knowledge of the psychotherapy and socio-psychiatric interventions he's got. So, and also these are evidence-based. The nurse uses an interview process. She interviews the patient, takes out a very important observation, makes a nursing diagnosis, and plans the care for that day. And then sets the short-term goals and the long-term goals. So these are very important things in care of patient, whether it is an altered perception, hallucination, or illusions, whether it is altered thought disorders like delusions, or it is the low self-concept of the patient, impaired judgment, or it is, not managing the physical needs of the patient. A patient is not able to manage the physical needs. And, very rightly said by Dr. Rupa, that we look after nursing professional, look after the patient holistically, in totality, looking about the therapeutic needs, looking about the physical needs, looking about the psychosocial needs, looking about the, rehabilitation needs, involving the family members for the rehabilitation needs. So this is very, very significant. For example, to enhance the self-concept of the patient, the nurse plans the activities to able to show the worth of the patient. For example, gives those activities after taking the nursing diagnosis where the patient will be successful in performing. For example, you tell the patient to you serve the food to the patients, other patients, So when patient serves the food, and you can tell when you go and serve the food, give a smile to the patient and say hello to the patient.
When patient comes back and says, I'm so happy today that I was able to make so many people happy and serve the food, this improves the self-concept of the patient. It's a very small planning done by the nurse. But look at the intervention which improves the self-concept. This is one example. You may be having hundreds of these examples, with you. So we also, another way to help the patient to improve the self-concept is, it is the day when you are very happy, you want to dress well, or when you're very sad, you dress well, you put on the lovely colors so that you look little active and you don't feel depressed and other people are not able to make out that you are sad or you are unhappy. Now, similarly, if the patient who's there, whom you tell to take bath, to shave, or to comb the hair, and look clean and neat, automatically the physical need is met. Cleanliness is there. The self-concept of the patient also improves. These are very small things, but the nurses are able to do wonderful job and improve the self-concept of the patient. Now, how to spread this schizophrenic awareness? I think, as I said, the celebrities are doing a good job, no problem about it. But, very well said, talk about it. Chalo baat kare is a very significant thing, which is mentioned in the beginning by Dr. Rupa. We also need to keep updating ourselves. Educate yourself. Every time when somebody invites, I just go and Google more, that what I have written in the revised book or what I have done, more I want to learn, more I want to know, because this gives us what are the easy ways by which we can help the patient and family and to our all colleagues, to improve our awareness about schizophrenia. Also, your loved ones, how they are doing. Sometimes pick up a phone and talk, how are you doing, it will be too late if you don't talk to them because maybe the person was so unhappy. For example, I just tell you, we just read in a paper yesterday, three women committed suicide at a home because the husband had died in COVID. And this lady is 40, or the daughter is 26 and 30. So they all committed suicide, by closing the door. But look at this. They put a letter outside that this house is full of gas. It is open. So when you open the windows, do not light matchstick. See, they were aware that other people, police entering into it can also get damaged. But look, if somebody had picked up the phone and talked to these people, how are you managing your life after the death of a husband? Or they had allowed them to come out and talk, probably we could have saved three precious lives. So ask your loved ones once in a while how they are. Open up about your experience. Now you find people are opening up on the TV. They're opening up in the newspaper, that what they go through, what problems they are going through, whether it is physical, sexual, biological, marital, they're talk social. They're talking about it, but not a larger segment. It is only a small segment. So we need to really encourage people to talk and encourage to use a kind language. Oh, in the hospital, sometimes say, sister, क्या bother कर रहे हैं हम इस patients के लिए? क्या है तो पागल ही ना? No, they are not pagal. They are like patients suffering from cardiac problem. They are patients who are suffering like other physical problem. The mental illness is also a problem. And that's where we go sometimes wrong, Volunteer yourself, if somebody wants to speak for something, volunteer yourself to listen to them, And of course, leverage social media. Talk in a social media about what is happening, how we can improve, or what we can do best to help these patients with psychotic disorder, emotional schizophrenia. Well, as we say, these are all activities which need to be done by nursing professionals, and nursing professionals are able to do activities on evidence-based, Imagine a person comes after ECT and the nurse is able to make what kind of complication the patient has. If the memory loss is there for a longer period, she immediately gets alerted and informs to the psychiatrist. So it's very, very important. The nursing interventions which are done are excellent. And let me tell you, there are two kinds of specialization in our country. Of course, nurse practitioners, we are going to have, we are embarking on it. But in midwifery nursing and in psychiatric nursing, without offending Dr. Vikram and other colleagues of ours in the medical stream,
The nurses are able to look after the patient with psychiatric illness and with midwifery, except the drugs prescription. Rest all care can be done completely by the nursing professional. Psychiatric nursing mental health professionals can do independently. Only thing you have to collaborate for medications and pharmacology, because that as nurses we are not able to prescribe. But with the Mental Health Nursing Practitioner Act or other Practitioners Act, we will be able to have some kind of a setup in which certain drugs one will be able to prescribe. So with these few words, let me congratulate Dr. Rupa and her team for organizing a very important webinar. And I'm sure the panelists of today's discussion will highlight the role of mental health psychiatric nursing professional, may it be physical, pharmacological, psychosocial, sociocultural aspect and interventions, because that's more important for nursing professional to share and provide care to the patient. When I talk about care, I talk about therapeutic, physical, psychosocial, sociocultural, and rehabilitative care. Thank you very much. Wish you all the best and God bless you all. Thanks. Thank you so much, ma'am. Very, very informative session. Especially you emphasize the nurse's role. Yes, we must understand our role and we have to take it very seriously that after prescribing medicine, after receiving the therapies, they are under the surveillance of nurses for a longer time. So we must understand our role in the part of schizophrenia. Now it's time to start with our panel discussion. Let me take the opportunity to introduce our first panelist, Dr. Vikram Wankhede, sir. He worked in Jaggi-Barnum Railway Hospital, Mumbai and Sion Hospital, Mumbai. He worked as basic medical scientist at Ethics Committee, Holy Family Hospital, Bandra. Sir proved his potentials in the field of research and worked as clinical research coordinator in many international clinical trials. Sir also is an active member of Amravati Psychiatric Association and handles the responsibility of Honorable Secretary. Sir is executive member of IMA Amravati. Sir is now currently working as a consultant psychiatrist at Andaman Mind Care Center, Amravati. Now, I would like to request you, sir, to brief us about schizophrenia and current approaches to pharmacological management for schizophrenia spectrum disorder. Over to you, sir. Am I audible? Yes, sir, clearly audible. Yes. Thank you so much for the kind words of introduction. So can you all see my screen now? Yes. Okay. Yes. Is it visible now? Yes, sir, visible. Okay. So first of all, I would like to congratulate your organization for arranging such a good clinical program, clinically oriented program for today's occasion of World Schizophrenia Day. And the response is such a great that even in the initial phase, I could not join. So I like the enthusiasm of all the participants and students and even the non-medical persons who are willing to join here. Yes, it will be an informative session for the primarily, of course, for the nursing students. But yes,
from all the to all the people who have joined apart from the nursing and medical profession also. So it would be okay if I mix up the languages like Hindi and English. Yes, Hindi and English both will do. Okay. So ज्यादातर लोगों को कुछ कॉमन टर्म्स भी मैं समझाना चाहूंगा, मैं मौका लेना चाहूंगा, right? So my topic today is current approaches to the pharmacological management of schizophrenia, and as our keynote speaker, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आज हमें जानकारी दी है इस बारे में कि what exactly the schizophrenia is. उन्होंने हिस्ट्री बताई है from the dementia precox, how the term schizophrenia get coined, and इतनी पुरानी हिस्ट्री होने के बावजूद इतना सब कुछ हम लोगों ने देखा है, सुना है, समझा है अपने समाज में. आज भी हम ऐसे कई पेशेंट्स देखते हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त है और अपना इलाज शायद ना करा पाने की वजह से अभी भी बहुत ज्यादा तकलीफें झेल रहे हैं. सो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी काफी स्कोप है हमें इस बारे में डिस्कशन करने का और इसके बारे में बात करने का, अवेयरनेस फैलाने का. आज मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है इस बीमारी के, इस मेडिकल कंडीशन के फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी देने का. और ये मैं I consider it's my privilege that you have given me this responsibility, क्योंकि सबसे बड़ा डर जो रहता है सबके मन में साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से पहले, वो काफी बड़ा उसका भाग जो है वो साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन से भी होता है. और आज मैं एग्जैक्टली यही करने वाला हूँ. मैं अपनी दवाइयों के बारे में, अपनी मेडिसिन के बारे में यहाँ पे अपनी बात रखने वाला हूँ. तो पहले हम एक शॉर्ट में वापस से रिवीजन कर लेते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है. ये एक मानसिक बीमारी है. सो व्हाट इज इट? सो इसके अंदर इट्स अ क्रॉनिक मेडिकल हेल्थ कंडीशन जिसके अंदर अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हम देखते हैं, लाइक डिल्यूजन्स, यानी कि किसी चीज का भ्रम होना, हम जैसे कहते हैं, ऐसे विचार जो कि किसी के समझाने से नहीं निकलने वाले, टूटने नहीं वाले हैं, उसे भ्रम कहेंगे. हेलुसिनेशंस, ऐसे कुछ आभास जो उस वस्तु के ना होते हुए भी हमें दिखते हैं. लगी फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई वहां पे है नहीं फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमसे बात कर रहा है. जैसे कोई सामने है नहीं फिर भी हमें दिखाई देता है. हमारे स्किन के ऊपर कोई भी चीज नहीं है फिर भी ऐसा लगता है कि शायद से अंदर से कोई चीज चल रही है या फिर कुछ अलग हमें महसूस होता है. आजू बाजू में कुछ भी चीज नहीं है फिर भी हमें अलग प्रकार की एक स्मेल आती है. तो ये सारे हेलुसिनेशंस के प्रकार होते हैं. ये भी स्किज़ोफ्रेनिया से जुड़े हुए लक्षण हैं. डिसऑर्गेनाइज स्पीच और बिहेवियर, यानी कि असंबद्ध तरीके के हाव भाव या जो हम कहेंगे कि जो आचार विचार रहते हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं. इम्पेयर्ड कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि ब्रेन के जो सीएनएस के जो हायर फंक्शंस हम कहते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग जो होते हैं, मेमोरी, कॉग्निशन, ये सारे पार्ट्स को बिलोंग करता है. तो ये बीमारी की सबसे एक जो जटिल समस्या है वो हमारे कॉग्निशन को इम्पेयर करती है, जिसके वजह से कि एक सामान्य व्यक्ति का सामान्य लाइफ जीना मुश्किल हो सकता है. इसके वजह से जो अभी हमने मैडम ने बात करी कि डिसेबिलिटीज काफी ज्यादा आती है. अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया में ये एक बड़ी बीमारी है जिसके वजह से बहुत सारे लोग, बड़ी पॉपुलेशन का एक हिस्सा जो है वो डिसेबल हो चुका है. जैसे मैडम ने अभी बताया हमें कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी हम स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को इश्यू कर सकते हैं. दैट्स बिकॉज ऑफ द इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस, क्योंकि वो अपने निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि वो अपने काम नॉर्मल लोगों की तरह शायद नहीं कर पाएंगे. जैसे फ्रीली हम लोग वर्किंग कर सकते हैं शायद वो नहीं कर पाएंगे. रैशनली थिंकिंग उनकी शायद सही नहीं हो पाती है जब ये बीमारी बढ़ जाती है. तो इसके वजह से डिसेबिलिटीज आती है. और यदि कोई व्यक्ति डिसेबल हो जाए तो उस व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार और समाज में उससे जुड़े हुए लोग भी सफर करते हैं, वो लोग जो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स के वजह से. और जो निगेटिव सिम्टम्स हम स्किज़ोफ्रेनिया के कहते हैं उसकी वजह से भी ये डिसेबिलिटीज ज्यादा आती है. क्यों होता है स्किज़ोफ्रेनिया? इसके बारे में कई संभावनाएं हैं, कई थ्योरीज है. काफी सारी जो थ्योरीज हम मानते हैं, इस
इसके लिए हम बायो साइको सोशल मॉडल, हम किसी भी जब मानसिक बीमारी के बारे में बात करते हैं तो बायो साइको सोशल मॉडल हम देते हैं। और बायो मतलब आपकी बायोलॉजी में कुछ फॉल्ट रहा होगा, आपके जेनेटिक्स में कुछ फॉल्ट रहा होगा, आपके इनहेरिटेंस में फॉल्ट रहा होगा, या तो आपके फैमिली में किसी को कोई मानसिक बीमारी है, या फिर कोई जीन्स ऐसे है जो आप तक पहुंच गए आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के थ्रू, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। बायो साइको, नाउ साइकोलॉजिकल, यदि हर एक व्यक्ति एक अपनी साइकोलॉजी के साथ पैदा होता है, जैसे एक शरीर की एक रचना होती है वैसे एक मानसिक रचना के साथ एक व्यक्ति पैदा होता है। तो आपकी बेसिक साइकोलॉजी यदि प्रॉब्लमेटिक है तो आपको ये बीमारी होने की संभावना बढ़ सकते हैं। और सोशल, कि हमारे आसपास क्या चीजें हो रही है, ये सोशल एस्पेक्ट्स भी उसके ऊपर रोल प्ले करते हैं ये बीमारी होने के ऊपर। इनके अलावा अब हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में और एक चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो है न्यूरोट्रांसमीटर थियरी, जो कि जिसके वजह से हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को। अलग अलग तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि केमिकल्स हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, जिनके अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं, या तो उनकी कमी हो जाए या तो कुछ केमिकल्स बढ़ जाते हैं जरूरत से ज्यादा, तब ये मेंटल डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे कई केमिकल्स के नाम मैं यहाँ पे गिना सकता हूँ, डोपामिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, या फिर गाबा, राइट, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक। इसके साथ साथ कुछ जो D2 रिसेप्टर्स पे ज्यादातर जो ड्रग्स काम करती है, अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स ब्रेन में होते हैं, D1, D2, D3, D5, तो उनके ऊपर में भी D2 रिसेप्टर्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है जब भी कोई क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। अलग रिसेप्टर्स भी काफी सारे टेस्ट किए गए हैं, बट ये रिसेप्टर्स पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे ब्रेन के अलग अलग जो न्यूरोकेमिकल पाथवेज होते हैं, उनमें से 4 विशेष पाथवेज जो होते हैं, मेसोकॉर्टिकल पाथवे, माइक्रोस्ट्राइटल पाथवेज, मेसोलिम्बिक पाथवेज एंड ट्यूबरोइंटिकुलर पाथवेज, ये इस बीमारी के प्रोग्रेशन में ज्यादा रोल प्ले करते हैं। आपने काफी बार सुना होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। अब ये हम जैसे नॉर्मली पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं उस तरह से नहीं होते हैं। इनका मतलब होता है पॉजिटिव सिम्टम्स वो होते हैं जो जनरली बीमारी के शुरुआती फेज में देखे जाते हैं, एक्यूट फेज में ज्यादा देखे जाते हैं, जिनके अंदर हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, एग्रेसिव बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, ये सारी चीजें ज्यादा होती है। शक करना, भ्रम करना, ज्यादा चिड़चिड़ापन करना, बेवजह किसी के ऊपर या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, एजिटेशन ज्यादा होना, ये सारे पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं। दूसरी ओर जैसे जैसे बीमारी दीर्घकालीन होती जाती है, क्रॉनिसिटी की तरफ बढ़ती जाती है, लंबी बीमारी होती जाती है, तो निगेटिव सिम्टम्स हमें इस बीमारी के नेक्स्ट पार्ट में ज्यादा देखने को मिलते हैं। निगेटिव सिम्टम्स का मतलब होता है कि भाई इमोशनल ब्लंटिंग हो जाती है, जो हमारे इमोशंस और भावनाएं जो है वो पहले तरीके से काम शायद उतना अच्छे से नहीं कर पाती है। हम हमारी सराउंडिंग्स के साथ साथ उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते, या तो फिर जो थिंकिंग है हमारी, जैसे अभी मैंने कहा था कि कॉग्निटिव सिम्टम्स जो है और खराब होते जाते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, रैशनल थिंकिंग जो है खराब होती जाती है। एनहेडोनिया यानी कि किसी भी चीज में रस ना होना, किसी भी चीज में प्लेजर ना होना, या तो फिर किसी भी चीज की हम खुद से कोशिश नहीं करते, हमें बताना पड़ता है, जो भी पेशेंट्स है उनको बताना पड़ता है कि भाई आप ये करिए, आप वो करिए, तो खुद से कोई इच्छा शायद से नहीं होती है, और समाज से वो दूर होने की कोशिश करते हैं, अकेलापन में रहने की कोशिश करते हैं, तो ये आइसोलेशन में चले जा सकते हैं पेशेंट्स। अब ये बीमारी के कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में ध्यान देना ही चाहिए। लगभग 40% तक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स कभी ना कभी अपने लाइफ के कार्यकाल में सुसाइड का प्रयत्न जरूर करते हैं, आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं। अब दुर्भाग्यवश इसमें से कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं, बट yes, suicide is the major complication and major issue where we have to intervene. ये एक साइकेट्रिक इमरजेंसी है, ये मैं कहूँगा, और इसे समझना, इसे टालना बहुत जरूरी है। काफी सारे सुसाइड्स प्रिवेंटेबल भी होते हैं, तो यहाँ पे भी हम पेशेंट्स की जरूर हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट एक उतना ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन है सब्सटेंस अब्यूजेस या फिर नशा। काफी बार रैशनल थिंकिंग जो है पेशेंट की थोड़ा सा सही से नहीं चलती है। पेशेंट अपने आप को ठीक करने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। तंबाकू इसमें से सबसे ज्यादा हानिकारक चीज है, जिनका सबसे ज्यादा प्रमाण में लोग इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को शराब या फिर गांजा, अफीम, इस तरह की भी नशे की आदतें और बीमारियां लग सकती है। तो ये और एक कॉम्प्लिकेशन हमें ध्यान देना चाहिए। तो हम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। अब ये बीमारी तो ध्यान में आ गई, इनके कॉम्प्लिकेशंस हमने समझ लिए, बट इसे मैनेज कैसे करें, इसका उपाय क्या करें? सबसे पहली जरूरत है कि हमें समझना चाहिए कि ये बीमारी के लक्षण है, राइट? लक्षण जब दिखाई दे तो डॉक्टर से सलाह ले, मेडिकल हेल्प ले। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे पास कोई भी पेशेंट आते हैं तो हमारे पास में सबसे पहले जो भी गोल रहेंगे, जो भी स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट रहेंगे, सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें जो अभी का जो एक्यूट एपिसोड है उसे ठीक करना है, कि अभी पेशेंट किस हालत में है, उस हालत को पहले हमें शांत करना है, फिर उसको मेंटेनेंस करना है। जैसे मैं काफी बार एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको रिलेट करता हूँ टीबी के साथ में। टीबी के जो 6 महीने की, 9 महीने की, 1 साल की जो ट्रीटमेंट हम देखते हैं, उसके अंदर 2 महीने का इंटेंसिव फेज होता है और 6 महीने का मेंटेनेंस फेज होता है। उसी तरीके के कोई भी मानसिक बीमारी जब हम देखते हैं तो पहले एक्यूट फेज जो चल रहा है उसको पहले रोक लीजिए, उसको पहले कंट्रोल कर लीजिए, और फिर मेंटेनेंस के लिए दवाई दीजिए। और उसी के अंदर आता है रिलैप्स प्रिवेंशन, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि काफी सारे मानसिक बीमारियां लंबे समय तक चलने वाली होती है, क्रॉनिक इलनेसेस होते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उसमें बार बार ये बीमारी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो रिलैप्स प्रिवेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। रिहैबिलिटेशन, पेशेंट का पुनर्वसन उसके अपने जीवन में करना हमें बिल्कुल भूलना नहीं है। ये कोई सिर्फ दवा गोली से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। हमें हमारा अप्रोच जो है रैशनल और रेडिकल अप्रोच रखना है। बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड अप्रोच हमें रखना पड़ेगा इस बीमारी के ट्रीटमेंट के अंदर। तो दवा देने के बाद में, साइकोथेरेपीज देने के बाद में भी हमें बहुत ज्यादा उसके रिहेबिलिटेशन पे, पुनर्वसन पे, उस व्यक्ति को अपने वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में हम कैसे पुनर्वसित कर सके, इसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। Providing psycho education and spreading awareness is the utmost important thing which we have to do, and ये आपके गोल ऑफ मैनेजमेंट में आना ही जरूरी है। हॉस्पिटलाइजेशन काफी बार पेशेंट्स को लग सकता है जब पेशेंट एक्यूट कंडीशन में आपके पास आता है। हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट का बहुत जरूरी है कि जब भी पेशेंट एक्यूट कंडीशन के अंदर आपके पास में आते हैं तो काफी पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज कराने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि ओरल मेडिसिन जो है, जो मुंह से दवाई खाई जाती है, काफी बार उनका असर होने में थोड़ा समय भी लगता है, तो हमें इंजेक्शंस की जरूरत पड़ सकती है। पेशेंट काफी बार काफी दिनों से भूखे रहते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, तो उस केस में पेशेंट्स को सलाइन देने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे ये जो सारी मेडिकल केयर है, जैसे कि मैडम ने बताया कि एक नर्सिंग केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है पेशेंट के मैनेजमेंट में ड्यूरिंग द फेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो वो प्रॉपर नर्सिंग केयर वो हॉस्पिटलाइजेशन में और हॉस्पिटल सेटअप में ही मिल सकती है, चाहे वो एक्यूट हॉस्पिटलाइजेशन हो, चाहे वो क्रॉनिक मेंटेनेंस रिहेबिलिटेशन का हॉस्पिटलाइजेशन हो। सो ये हमें निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। फिर जब हम इलाज करेंगे तो उसके अंदर नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की हम बात कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज में साइकोथेरेपीज है, काउंसलिंग है, जिसके अंदर डॉक्टर पंकज सर आपको बताएंगे, जो कि खुद एक बहुत ही एक्सपीरियंस काउंसलर है, जो हमसे बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। ECT, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। देन विल कम टू द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दवाइयों में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ऐसे हम एंटीसाइकोटिक मेडिसिन को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जनरेशन वो है जो बहुत पहले इजाद हुए थे, उनका इन्वेंशन हुआ था, लाइक इन 1950s। क्लोरप्रोमाजिन ये पहली जब दवाई आई थी, तो उसके बाद काफी सालों तक कोई दूसरी दवा बनी ही नहीं थी। काफी सालों तक क्लोरप्रोमाजिन एक ऐसी दवा रही है जिन्होंने एक्यूट साइकोसिस के पेशेंट्स को ठीक किया है। हाँ, ऑफ कोर्स इसके अंदर सेडेशन ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो तब से चला आ रहा है समाज के माइंड में कि भाई साइकेट्रिस्ट जो दवा देते हैं उससे सिर्फ सोना पड़ता है, उससे नींद आती है बहुत, उसकी आदत लग जाती है। यस, कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिससे नींद आती है। तो मुझे बताइए, हम सर्दी की भी कोई गोली खा ले तो उससे भी तो नींद आती है, राइट? तो जब उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जब हम कोई पैरासिटामोल की गोली भी खा लेते हैं बुखार के लिए, तो वो भी लिवर पे आपके अफेक्ट कर सकती है। साइड इफेक्ट्स सारे मेडिसिन के होते हैं। दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन ही नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, और मैं ये दावा करता हूँ जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है उस मेडिसिन के कोई इफेक्ट नहीं है, जिसे हम प्लासिबो कहते हैं।
लेकिन ये साइड इफेक्ट्स कौन से डोज पे होंगे, कौन से तरह के पेशेंट्स को होंगे, कितना दिन दवाई लेने के बाद में होंगे, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद ही हर डॉक्टर अपने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देता है। और यदि कोई साइड इफेक्ट ध्यान में भी आते हैं तो हम उसे टैकल कर सकते हैं, डोज चेंज कर सकते हैं, कुछ दवाई में बदल कर सकते हैं, दवाई का पूरा मॉलिक्यूल चेंज कर सकते हैं। ये कई सारे ऑप्शंस आज हमारे पास में है। वी आर नॉट इन 1950s राइट नाउ। हमारे पास एक पूरा बास्केट है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस का और एडजंक्टिव मेडिकेशंस का, जो हम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जो पुराने जमाने के जो एंटीसाइकोटिक्स थे, जो आज भी उतने ही या फिर हम कहेंगे मोर इफेक्टिव है नए जनरेशन से, लेकिन थोड़ा उनके साइड इफेक्ट प्रोफाइल ज्यादा थे, जैसे कि क्लोरप्रोमाजिन, हैलोपेरिडोल, पेनफ्लुरिडोल, ट्राइफ्लोपेराजिन, ये सारी चीजें हैं, फ्लूपेंथिक्सोल है, जुक्लोपेंथिक्सोल है। तो ये पुराने मेडिसिन है। नए मेडिसिन में क्या है कि उनके जो एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट्स थे फर्स्ट जनरेशन के, वो सेकंड जनरेशन मेडिसिन में नहीं दिखाई देते हैं, है ना। तो इनकी टॉलरेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। ऑफ कोर्स थोड़ी एफिकेसी पुराने मेडिसिन से कम है, लेकिन 2 दिन बाद एक्शन अच्छे से चालू हो जाती है। सेकंड जनरेशन मेडिसिन में क्या है कि मेंटेनेंस फेज में उतना ज्यादा हमें तकलीफ नहीं मिलती है देखने को, टॉलरेबिलिटी पेशेंट की अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए आजकल बहुत ज्यादा तौर पे सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो है वो ज्यादा प्रीफर किए जाते हैं जिस शुरुआती दौर में, जैसे कि ओलेंजेपिन है, एमिसल्पिराइड है, क्यूटेपिन है, एरिपिप्राजोल है, राइट, ब्लोनेंसिरिन है, रिस्पेरिडोन है, पैलिपेरिडोन है। ये सारी चीजें जो है हम सेकंड जनरेशन में आते हैं। क्लोजापिन भी सेकंड जनरेशन में आता है, लेकिन ये क्या हम कहेंगे, एक रिजर्व ड्रग है। जब रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया में कोई दवा काम नहीं करती तो काफी बार हम क्लोजापिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी गोल्ड स्टैंडर्ड दवा है। नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जैसे कि हाल ही में एक नया मॉलिक्यूल हम अभी आए हैं मार्केट में, हम यूज कर रहे हैं उसको, कैरिप्राज़िन भी एक दवा है जो हम उसका इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं। देखते हैं उसकी फंक्शनलिटी हमें कितनी मालूम पड़ती है पेशेंट्स के ऊपर। अब एक और सबसे अहम बात होती है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में, वो दवाई छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लैक ऑफ इनसाइट। ये बीमारी ऐसी है जिसके अंदर पेशेंट को उनके बीमारी का एहसास नहीं होता, इसीलिए वो दवा छोड़ देते हैं। जैसे यदि मैं किसी हार्ट पेशेंट से कहूँ कि आपका हार्ट की बीमारी है, आपको ये दवा लेनी पड़ेगी, आपको वजन कम करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो वो तुरंत मान जाते हैं, अरे यार मेरा हार्ट ठीक होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया मुझे बीमारी है, तो मैं ये सारी चीजें करूंगा, मैं दवा लूंगा, मैं पथ्यों का पालन करूंगा। लेकिन इनसाइट ना होना ये स्किज़ोफ्रेनिया का सबसे बड़ा लक्षण है, ऐसे मैं कहूंगा। वो जिस आभासी दुनिया में जीते हैं, उनके लिए वो दुनिया असल लगती है उन्हें। यदि उनके मन में कोई भ्रम है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे कुछ ना कुछ हार्म पहुंचाएगा, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो उनके लिए वो सच है, चाहे भी हमें पता हो कि ये सब झूठ है। उसी को तो डिल्यूजन कहते हैं। यदि वो भ्रम टूट जाए तो वो भ्रम था ही नहीं, वो सिर्फ एक हम कहेंगे गलत फहमी थी। लेकिन वो भ्रम उसी को कहते हैं जो टूटता नहीं है समझाने से, उसे दवा से तोड़ना पड़ता है। वो लक्षण है एक बीमारी का। यही वजह है कि काफी सारे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट जो है दवाई बीच में छोड़ देते हैं, खाने के बाद मुंह में छुपा के बाद में थूक देते हैं, दवाई कहीं फेंक देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये सब हम प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है उनके रिलैप्स होने का, बीमारी के लक्षण बार बार बढ़ने का और बीमारी की तीव्रता बार बार बढ़ने का, ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। इसके ऊपर उपाय के माध्यम से जो नॉन कंप्लायंट पेशेंट्स है उनके लिए लॉन्ग एक्टिंग डेपो इंजेक्शंस आते हैं कुछ एंटीसाइकोटिक प्रिपरेशंस के, जैसे कि जुक्लोपेंथिक्सोल है, पैलिपेरिडोन, फ्लूफेनाजिन, हैलोपेरिडोल, रिस्पेरिडोन और ओलेंजेपिन। ये जो दवाइयां है ये लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन के माध्यम से भी आती है। अब लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन क्या होता है? ये डेपो इंजेक्शन होते हैं। इसको यदि हम डीप इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करते हैं तो वहां पे वो दवाई जम जाती है और धीरे धीरे उसमें से So your voice is not audible. So
So your voice is not audible. I think Vikram sir is facing some connectivity issue. I request everyone to wait for a while. As sir is taking time to join, we can lead our panel discussion towards our second panelist, Mr. Pankaj Vasadkar, sir. Pankaj, sir, just hold on for a second. Pankaj sir is practicing as clinical psychologist and psychotherapist since 1995. He had done his research work in behavioral disorder in childhood and therapeutic approaches. Sir is visiting professor, Medical College, and executive member of Department of Lifelong Learning and Extension at Sant Gadge Baba Amravati University, accredited by RCI, Beck Institute UK, and Albert Ellis Institute USA, as therapist and also for psychometric assessment. As a part of his research interest, Sir shoulders the responsibility of co-guide of 3 research fellows for PhD. Sir also participated in 9 international and 13 national conferences. Thank you very much, sir, for accepting our invitation. And now I hereby request you to take over the mic and start with the interactive session. Over to you, sir. So kindly unmute yourself. Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. How are you? How is everything going on? Everything is good, sir. Thank you for asking. Good. How are you, sir? Thank you. I'm a little bit nervous because the technical issues are there. That's why I feel ये इतना बड़ा अच्छा सेशन जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है
उसको थोड़ा और बेहतर कैसे बनाए, क्योंकि डॉक्टर विक्रम वानखड़े सर, यस, डॉक्टर विक्रम वानखड़े वाज रिजॉइंड वंस अगेन आई सपोज, I request Kiran sir to हाँ उनको पहले कर continue लेते हैं, better. Yes. यस उनका कंटिन्यू कर लेते हैं। Sure. थैंक यू, थैंक यू। Yes. Sorry, I think there was some technical issue. Yes, sir. Yes, sir. I got out from the meeting. Happy to have you back, sir. You can continue with. I thought my lecture was so boring that you. No, not at all, sir. Not at all. Okay. I would just like to share my screens again. Sure, Yes. sure. Take your time, sir. Yes. Extremely sorry for the hindrance. Yes. Yeah. I'm audible properly? Yes, sir. Clearly audible. Yes. अब हम बात करेंगे एडजंक्टिव ट्रीटमेंट्स के साथ में। हमने काफी सारे एंटीसाइकोटिक्स के बारे में सुन लिया, बात कर ली, लेकिन इसके साथ साथ में काफी बार हमें कुछ और भी मेडिसिन यूज करने पड़ते हैं जो एंटीसाइकोटिक ग्रुप में नहीं आते हैं। काफी बार पेशेंट्स को नींद की शिकायत काफी होती है, शुरुआती दौर में बेचैनी बहुत होती है, तो काफी बार हमारे साथ में ऐसे कुछ मेडिसिन है जो सेडेशन में हेल्प करते हैं, नींद आने में हेल्प करते हैं, क्योंकि दिमाग जब सोएगा नहीं तब तक वो रिकवर नहीं होगा, तब तक वो उसको अच्छे से आराम नहीं मिलेगा। वो एंजाइटी कम करने के लिए भी हमें कभी-कभी मेडिसिन देने पड़ते हैं। साथ ही साथ काफी बार मूड स्टेबलाइजर जो मेडिसिन होते हैं, काफी बार एग्रेशन या फिर जो मूड लायबिलिटी जिसको हम कहते हैं, जो हमारे इमोशन से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, काफी बार डिप्रेसिव फील करते हैं पेशेंट, काफी बार बहुत ज्यादा इलेटेड मूड उनका रहता है, तो काफी बार मूड स्टेबलाइजर्स भी हमें इनके साथ साथ में यूज करने पड़ते हैं मेडिसिन, राइट। जैसे कि सोडियम डाइवैल्प्रोइट सोडियम रहते हैं, ऑक्सकार्बाजेपिन या कार्बामाजेपिन होते हैं, तो इस तरह के मूड स्टेबलाइजर। लिथियम होता है, बहुत अच्छा मूड स्टेबलाइजर है, जो कि बहुत पुराना मॉलिक्यूल है, आज भी उतनी ही इफेक्टिवली हम उसको यूज कर सकते हैं। काफी बार कुछ साइड इफेक्ट्स टैकल करने के लिए हमें एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस का भी यूज हम कर सकते हैं, ट्राइक्सिफेनिडिल जो बहुत वेल नोन मेडिसिन है। और यदि हमारे साथ में हमारे पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया के साथ में और कोई बीमारी है या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशन स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से हो रहे हैं, तो ऐसी कोमॉर्बिडिटीज का भी हमें इलाज करना चाहिए। यदि पेशेंट डायबिटिक है तो उनके एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी हमें शुरू रखने पड़ेंगे, बीपी के मेडिसिन शुरू रखने पड़ सकते हैं। तो ये ख्याल भी हमें, हाँ, काफी बार पेशेंट्स यदि खुद को इंजूर कर लिए तो उस इंजरी का भी ख्याल रखना पड़ता है। सो दीज आर ऑल एडजंक्टिव ट्रीटमेंट्स व्हिच वी हैव टू डील विद दैट। अब हम आते हैं ईसीटी की तरफ, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट फॉर्म ऑफ द थेरेपी विच साइकियाट्रिक फील्ड में जो हमारे पास था। विद्युत उपचार जिससे हम कहेंगे, शॉक ट्रीटमेंट के नाम से इसे जाना जाता है, और इसके लिए तो भाई पेशेंट्स को मेडिसिन से भी ज्यादा डर लगता है, जबकि ये प्रूवन है कि ईसीटी इज स्टिल द सेफेस्ट ट्रीटमेंट इन द साइकियाट्री। हाँ, पहले अनमॉडिफाइड ईसीटीज दिए जाते थे क्योंकि पेशेंट्स को पता होता था कि उन्हें एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिलने वाला है, जिसके बाद में एक झटका पेशेंट को आता था, काफी सारी तकलीफ पेशेंट को होती थी, क्योंकि उस समय तक एनेस्थीसिया नाम की कोई ब्रांच इवॉल्व नहीं हुई। आज एनेस्थेटिस्ट या फिर भूल जिसे हम कहते हैं, जो ऑपरेशन के पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं, ऐसा छोटा सा एनेस्थीसिया जिसे हम स्मॉल जनरल एनेस्थीसिया, शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया जिसे हम कहते हैं, वो पेशेंट को देके उसके बाद में अगर ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ब्रेन को दिया जाए, तो काफी बार जो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्बैलेंस ब्रेन के अंदर बने होते हैं, उसे हम जल्दी से जल्दी ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी होती है ट्रीटमेंट, बहुत ज्यादा जब एक्यूट फेज में पेशेंट है, बहुत ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज पेशेंट्स की बढ़ी हुई है, पेशेंट कुछ खा पी नहीं रहे हैं, पेशेंट कैटाटोनिक फेज में है, जो काफी दिनों से काफी बार एक ही पोजीशन में खड़े रहता है, काफी घंटों तक पेशेंट एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं, आप उनका हाथ ऐसा रख दीजिए तो ऐसा ही रहेगा 4 घंटे तक, 8 घंटे तक, इसे कैटाटोनिक फेज कहते हैं। ये पेशेंट के लिए हार्मफुल होती है। इस फेज में भी ईसीटी लाइफ सेविंग रोल प्ले कर सकती है। जिस तरह से किसी पेशेंट का हार्ट फेल हो रहा है तो हम पिक्चर में देखते हैं कि उसे शॉक देके रिवाइव किया जाता है, बस उसी तरह का और बहुत ही मिनिमल अमाउंट का जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, वो ब्रेन को यदि हम उसे स्टिमुलेट करें तो काफी बार ये स्टिमुलेशन टेक्निक हमारे पेशेंट्स की बीमारी को बहुत जल्दी और अच्छे से कंट्रोल कर सकती है।
हाँ, इसका इफेक्ट कुछ शॉर्ट लास्टिंग भी होता है और कुछ केसेस में शुरुआती दौर में कुछ नॉन स्पेसिफिक चीजें पेशेंट भूल भी सकते हैं, लेकिन वो अपने आप याद आ जाती है। उसके लिए बहुत ज्यादा डरने की या कोई दूसरी दवाइयां लेने की भी काफी बार पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ती है। इस चीज के लिए भर्ती ही होना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। काफी सारे पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं जो सुबह आते हैं, ईसीटीज लेते हैं और घर पे चले जाते हैं और अपना दिन भर अपना अच्छे से काम करते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम्स देते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं ईसीटी लेके भी। हम सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब हमारे पेशेंट्स फंक्शनली अपने दुनिया में, अपनी जिंदगी में वापस जाते हैं, पुनर्वसित होते हैं। और ईसीटी एक ऐसी ही लाइफ सेविंग या फिर लाइफ चेंजिंग प्रोसेस, काफी बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं पेशेंट्स के और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हम देखते हैं। नाउ, क्या अच्छी चीजें है दवाई देने से और क्या बुरी चीज है, एडवांटेजेस क्या है इसके? हाँ भाई, अच्छी मतलब आप दवाई जल्दी दे देंगे पेशेंट को तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएंगे, अर्ली रेमिशन हमें मिल जाएगा, रिलैप्सेस नहीं होंगे, बार बार बीमारी के लक्षण बढ़ेंगे नहीं। जो डिसेबिलिटी पेशेंट को इस बीमारी की वजह से हो सकती है उसे हम कम कर सकते हैं और पेशेंट अपनी लाइफ में अच्छी तरह से जी सकते हैं। फंक्शंस जो है पेशेंट्स के बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा काम और पढ़ाई और अपने दैनंदिन जीवन में वो बहुत अच्छे से रूटीनली वर्क कर सकते हैं। एंड रिहैबिलिटेशन और मेंटेनेंस में बहुत अच्छा हेल्प हो सकती है दवाई की वजह से। लिमिटेशंस क्या है दवाई देने के, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देने के? ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स, जैसे मैंने बोला हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, इनके भी हैं। यदि हम उसको रेगुलरली मॉनिटर करें, रेगुलरली फॉलो करते रहे तो हम जरूर पेशेंट को उन साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं या फिर साइड इफेक्ट फटाफट उसके ट्रीट भी कर सकते हैं। इकोनॉमिकल बर्डन ऑफ कोर्स रहता है, क्योंकि जो नई दवाई है जो इफेक्टिव भी है, जिनके साइड इफेक्ट्स भी कम है, जैसे नई नई दवाई आती है वो थोड़ी महंगी भी होती है, पुरानी दवाइयों के साइड इफेक्ट ज्यादा है तो उनके कॉस्ट भी कम है। तो ये इकोनॉमिक जो इम्बैलेंस है वो हमेशा मेडिकल फील्ड में रहेगा, उसको बराबर से हमें हैंडल करना पड़ता है। ये चॉइस हमारे इट विल बी एन इन्फॉर्म डिसीजन। ये चॉइस पेशेंट्स को हम दे सकते हैं और डॉक्टर से के साथ बात करके, कंसल्ट करके हम दवाइयों का चयन कर सकते हैं कि किस तरह की दवाई हम पेशेंट्स को दें। कंप्लायंस इश्यूज बहुत आते हैं दवाई देने के बाद में, पेशेंट उसके साथ में कंप्लायंस कितना करेगा। वापस से मैंने पहले कहा था कि दवा छोड़ देते हैं काफी बार पेशेंट, तो ये बहुत बड़ा इशू और लिमिटेशंस हमारी दवाइयों के उपचार के डेफिनेटली। सो आज के इस लेक्चर में या फिर टॉक में मैं ये कहूंगा कि टेक होम मैसेज में सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा, दैट अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट इज द की फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। जितना जल्दी हम पेशेंट के लक्षण पहचान जाएंगे और उसे ट्रीटमेंट देंगे, उतनी ही वो बीमारी जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। आज बीमारी पैदा हुई है और हम 5 साल बाद उसका इलाज करने जाएंगे, 2 साल बाद इलाज करने जाएंगे, डेफिनेटली तब तक अंदरूनी ब्रेन में बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होगा, बीमारी के जो ट्रीटमेंट रहेंगे उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे और पेशेंट की लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट इज द की फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंड the most important thing, spreading right information to the right people at the right time, यानी कि सही जानकारी देना is the key for early detection and treatment. So यदि हमें डिटेक्शन और ट्रीटमेंट अच्छी करनी है तो हमें समाज में इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी, सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं रुकता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातें इतने सारे हिंड्रेंस के बाद भी सुन ली। सो थैंक यू वेरी मच। Yes, stop the share screen. Yes. Thank you very much, sir, for briefing about the disorder in a very simplified way. I am very much assured that all understood the concept very well. And now the panel is open for queries. Participants are requested, if they have any queries related to the session, they can put in the chat box. Or they can raise their hands, I can unmute them. Yes. I can see one query, sir. Yes. I'll read it out for you. Which is the most effective therapy for schizophrenia? Most effective among all? Look, I have mentioned 2 of them. ECT. Yes. For resistant schizophrenia and clozapine.
That is another gold standard approach for resistant schizophrenia. So if you are talking most effective in that context, then these two are there. Yes, yes. Thank you, sir. Any other query? I can see in my message, there is another query sent by madam. What can be the initial interventions we can say, or the first line treatment for schizophrenia? First line treatment, as I mentioned, the second generation antipsychotics, that is, these are currently the first line management of schizophrenia, which we use, where we choose usually olanzapine, risperidone, aripiprazole. We have that kind of second generation antipsychotics. These are more effective, as well as the side effect wise also they are well tolerable by the patients. So these are the first line form. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Hope, this is clear and you are satisfied with the answers. Leading towards our second session, without taking much time, I will reintroduce Pankaj sir to you all. So Pankaj sir is practicing as a clinical psychologist and psychotherapist since 1995. He had done his research work in behavioral disorder in childhood and therapeutic approaches. Sir is visiting professor in medical college and executive member of Department of Lifelong Learning and Extension at Sant Dadke Baba Amravati University, which is accredited by RCI Beck Institute UK, Albert Ellis Institute USA, as therapist and also for psychometric assessment. As a part of his research interest, Sir shoulders the responsibility of co-guide of 3 research fellows for PhD. Sir also participated in 9 international and 13 national conferences. Thank you so much, sir, for accepting our invitation. I hereby request you to take over the mic and start the interactive session. Over to you, sir. Kindly unmute yourself, sir. Okay. Yes, thank you. Nice to see you once again. Can I share? Yeah, can I share my PPTs along with you? I'm highly impressed by your organization, the Nursing Shikshak Sangha. We can call the Nursing Teacher Association. I'm greatly impressed by Dr. Bimla Kapoor's statements. She's very nicely explained all and every history part and the nursing role for the schizophrenia. And definitely, well, thanks Dr. Vikram sir. Yes, I also working with him. So I'm मुझे लगा था कि आपका प्रेजेंटेशन में दिक्कत ना आए, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से आपको बीच में रुकना पड़ा, सॉरी. तो लेकिन आपने काफी अच्छे तरीके से स्किज़ोफ्रेनिया सामने रखा है. उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी थैंक्स कहना चाहूंगा एंड मॉडरेटर का भी. मेरे जो टॉपिक आया हुआ है, द टॉपिक इज साइकोमेट्रिक अप्रोचेस फॉर स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स and their key relatives. Can I share my? Yeah, actually, I'm trying to share your. Okay, I can hear share. Yes, sir. Please allow me to share. Okay, sir. Just hold on for a second. During this technical issues, I will tell you the one story. ये जो आपका एक स्टोरी है, जैसे डॉक्टर बिमला कपूर जी ने बताया था कि डॉक्टर फिलिप पिनेल, यस इट इज ट्रू, 18th सेंचुरी में काफी बार, ये फ्रांस की बात है, फ्रांस में काफी तौर पे राजे उमराव रहते थे, तो उनके यहाँ पे अपने बड़े बड़े पैलेसेस के नीचे काफी ल्यूमेनिक पेशेंट्स को रखा करते थे.
कि ताकि वो एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। और ये जो डॉक्टर फिलिप पिनेल जी है, ये इज ए फिजिशियन एक्चुअली, इज नॉट अ साइकेट्रिस्ट। बाद में उनको साइकेट्री में बड़ी इंटरेस्ट आई, फिर उन्होंने काम किया। लेकिन ये जो बात है ये बड़ी गौर करने वाली है, सुनने वाली है। एक बार उनका एक दोस्त था, बड़ा अच्छा पियानो बजाता था, वायोलिन बजाता था, और काफी दिनों से उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। और फिर उन्होंने सोचा कि ये बंदा चला कहाँ गया यार। अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ दिन तक मिलते हैं, बाद में नहीं मिलते हैं। तो उनको लगा चलो ठीक है, कहीं गए होंगे, आ जाएंगे कुछ दिन के बाद में। सो एक दिन वो किसी अपने पेशेंट्स को देखने के लिए किसी राजे अमरावर के यहाँ पे गए थे, तो उनको एक वायलिन की धुन याद आई, सुनाई पड़ी कान के ऊपर। तो उन्होंने पूछा ये कौन बजा रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे तहखाने में एक पेशेंट है, तो वो बजा रहा है। ही इज माई फ्रेंड, मुझे देखना है उसे। तो नीचे तहखाने में चले गए और देखा उन्होंने वहां का दृश्य, तो एकदम बहुत ही विचित्र तौर से था। सब लोगों को हाथ पैर को बांधे हुए रहे थे, किसी के चेन से बांधा हुआ था, किसी को समवन सर क्राइड, सब सब सब। ये देख के डॉक्टर फिलिप पिनेल वाज हाईली पजल्ड, उनको काफी काफी सदमा पहुंचा। और उन्होंने उस वक्त फ्रांस की रानी को कहा कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट किया, आप इन लोगों को बाहर छोड़ सकते हो, कम से कम इनको एक खुली हवा में सांस तो लेने का स्वातंत्र है या नहीं है। रानी ने कहा नहीं, इट इज डेंजरस फॉर अस, ऐसे लोगों से समाज का नुकसान हो सकता है। शायद उस वक्त का ये सोच का नजरिया हो। डॉक्टर फिलिप पिनेल जी ने काफी स्ट्रगल करने के बाद में उन लोगों को बाहर निकाला, और वह दिन था 24 मई। एग्जैक्टली उसी दिन से हम लोग वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के साथ में इंटरलिंकिंग करते हैं। सो इस दिन का जो आज का औचित्य है वो ये है कि इसके बारे में, जैसे डॉक्टर विक्रम सर ने कहा, राइट पर्सन, राइट जानकारी और राइट समय तक पहुंचाना। तो इसके लिए हम लोग चल रहे थे। हियर इज माय फर्स्ट स्लाइड, sorry, my slides are the very pictorial, and the flow charts, not the more and more words are there. Here is a one person, we can see, he is a Maharshi Karve. Okay, can you see? आप लोग देख पा रहे हैं उसको? Yes, sir. या नहीं, मुझे शेयर करने की परमिशन दीजिए मैम, सो मैं उनके ऊपर अपना पैड से उसका ये कर सकूं। Okay. फ्लो चार्ट, या Actually, I am trying to, sir, to allow you, but I am unable to. okay, no issue. I will share the PowerPoint. You want it to be in a bigger frame, sir? If possible, no issue. Yes, he is Mr. Maharshi Karve. Can you guess him? Yes, sir. Yeah. I am really honorable कि उनके इंस्टीट्यूट के नीचे मुझे ये सब कुछ प्रेजेंट करने का अवसर मिल रहा है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को बता दूं कि महर्षि जी ने जो काम किया हुआ है, दैट इज एक्चुअल द रैशनल। ये जो वर्ड है ये काफी अच्छा उनके ऊपर लागू पड़ता है, द रैशनल पर्सन। उनके लड़के भी थे रघुनाथ पंत, ही इज ऑल्सो वेरी रैशनल पर्सन। उस जमाने में उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, तो वी सैल्यूट देम कि वो मूवमेंट आज भी चल रही है। और आप लोगों को कभी वक्त मिला तो महर्षि जी के बारे में और कुछ जानकारी बताएंगे, विच इज रिलेटेड विद साइकेट्री। ओके, बेसिकली ही इज वेरी scholar person. He's a good mathematician, Sanskrit, and along with this, he also studied the psychology. Freud के एक किताब में उनका नाम है, so it is very achievable for us कि हम उनके नाम के इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं। My second slide, please. Yes, sir. Yeah. The schizophrenia को एक्सप्लेन करते वक्त साइकोथेरेपी को जब हम लोग अप्रोच करते हैं, जैसे मैडम ने डॉक्टर फिलिप पिनेल का उदाहरण कहा था, तो और डॉक्टर विक्रम सर ने जो अभी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के बारे में बताया था, ये 1980s के बाद में डीएसएम के आने के बाद में, मोलेकुल्स को आने के बाद में ये सब कुछ हुआ है। लेकिन आप थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो आपको इस स्किज़ोफ्रेनिया की, जिसको डिमेंशिया प्रिकॉक्स कहा करते थे, अर्ली एज में पाया जाने वाला डिमेंशिया, तो उस जमाने में 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट मॉडलिटीज काफी 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 धक्का देने वाली थी। अगर आज मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ऐसा भी हो सकता था। अगर उसको व्हील चेयर कहते थे, उनको चेयर पे बांधा जाता था और गोल गोल फिराया जाता था, ताकि उस टाइम की कंसेप्ट ये थी कि शायद कान में कुछ आ गई है
ज्याला आपण मराठीत म्हणतो मनात वारं गेलं, तो कुछ ना कुछ उसको लग गया, सोल इज लिटिल बिट हर्टेड, द सोल कंसेप्ट, तो सोल के ऊपर सारी ट्रीटमेंट चालू रहती थी। देन द सेकंड इज अ वाटर थेरेपी। ये सुन के भी आपको बड़ा अचंभा लगेगा कि उस बंदे को या बंदी को पूरा पीठ के पीछे खड़ा करके पीछे से पानी का फवारा मारा जाता था। हाँ, यस यस यस, ये सब फिलिप पिनेल जी के म्यूजियम में रखे हुए सब इलेक्ट्रिक चेयर्स है, उसके बाद में एक बॉक्स है, ये वाटर थेरेपी है। एक थेरेपी मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग कहोगे यस यार, शुक्रगुजार है हम भगवान के 21st सेंचुरी में हम लोगों ने जन्म लिया, वी आर इन अ सेफेस्ट जोन राइट नाउ। उस वक्त थेरेपेटिक अप्रोचेस में कान के नीचे एक ड्रिल किया जाता था और एक मेटल डाला करते थे ताकि वो ब्लॉक हो जाए, और शायद उसको वो इफेक्टिव मानते थे। तो ये तो हो गया बाकी के ट्रीटमेंट्स का पार्ट। अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या उस वक्त भी साइकोथेरेपी चल रही थी, यस डेफिनेटली चल रही थी। अगर मैं आपको डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की बात बता दूं तो ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन साइको एनालिसिस। वो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को काफी लंबे समय तक सिटिंग्स दिया करते थे, उनके सेशंस अवर 3 आवर्स तक चलते थे। देन ही वर्किंग ऑन द एसोसिएशन पार्ट, द ड्रीम एनालाइजेशन पार्ट। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ते गया, स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर स्टडी किया गया, और स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर स्टडी करने के बाद में उसके अलग अलग सिम्टम्स पाए गए, फिर उसके बाद में उनको पता चला कि इसमें न्यूरोकेमिकल्स का रोल है वगैरह वगैरह, क्या लिमिटेशन है। तो आज हमें शायद डॉक्टर फ्रॉइड सर की जो थेरीज थी, थेरेपीज थी, उसके ऊपर हंसी आए। हमें लगे कि ना ना, इट इज नॉट यूजेबल फॉर अस राइट नाउ। अभी कौन साइको एनालिसिस कर सकता है जिस व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया के अंडर इनसाइड ही नहीं है, जजमेंट ही नहीं है, तो उसको साइको एनालिसिस कैसे किया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट्स आर देयर ना, so you feel very अचंबा। आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पता है क्या? आप उसका लाइफ सेरेमनी भी करते हो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग का हमें अभी तक कोई पता नहीं है। किसने शुरू किया होगा, कब शुरू किया होगा, उसके मन में क्या विचार आएंगे, उसको क्या दिक्कत होगी, गॉड नोज। अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है। और सबसे बड़ी और एक दुर्भाग्य की बात मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरी बुद्धि का सवाल है, मैं जानता हूं केवल 5% साइकेट्रिक नर्सिंग साइकेट्री की तरफ मुड़ती है, एमएससी साइकेट्री के लिए। अब हमारे यहाँ पे इलनेस का प्रमाण, मेडिकल प्रोफेशनल, इनका प्रमाण अगर देखा जाए तो आपको पूरी तरीके से व्यस्त दिखेगा। संख्या काफी ज्यादा है और काम करने वाली काफी कम है। दैट्स वाई मैंने, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी डॉक्टर वंदना मैडम से, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि यस यू आर मोस्ट वेलकम फॉर द बीपीटीपी, वी नीड इट। हमें किसी भी हालत में, यस हमें किसी भी हालत में आने वाले कुछ दिनों में सेकंड टीम जनरेट करना है जो साइकेट्रिक में काम कर सके। सो पुराने जमाने में भी साइकेट्रिक इलनेसेस के लिए साइकोथेरेपीज यूज किया जाती थी, लेकिन अभी प्रेजेंटली क्या साइकोथेरेपीज के मॉडल्स है, क्या लिमिटेशंस है, उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। सेकंड स्लाइड प्लीज। या सेकंड स्लाइड। नो, सेकंड स्लाइड मूव नहीं हो रही है शायद। सेकंड स्लाइड के ऊपर कुछ ज्यादा नहीं है। सेकंड स्लाइड के ऊपर काफी सारे पिक्चर्स बनाए गए हैं, द फेसेस, यू कैन से द फेसेस, तो काफी मल्टीपल फेसेस है वहां पे। यस यस यस। सो अगर हम लोग देखें सेकंड स्लाइड के ऊपर तो नहीं आ रहा है शायद, तो काफी सारे पिक्चर्स है। Displayed actually. I don't know what is the issue, but I had displayed your slide. Okay, but I am not possible to see it. Again share, sir. I'll stop share. Again share. Okay, okay. शेयर करते करते हम लोग तब तक बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इंटरेक्टिव मोड में रहे, ठीक है? क्वेश्चन आंसर सेशंस तो रहेंगे। आई टू एग्री। यस, थैंक यू फॉर द शेयरिंग मैम। दीज आर द फेसेस, दीज आर द फेसेस। आमतौर पे आज के दिन बहुत बार हम लोग स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं, ओके? अभी इसमें जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है ये काफी एक के साथ एक में बुनी हुई है। एक के साथ में एक बुनी हुई इसके लिए है,
Psychopharmacotherapy is essential in acute condition. At that same time, वो acute symptoms कम होने के बाद में आपको साइकोथेरेपी के मॉडल्स लगाना जरूरी पड़ता है। मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें अगर चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसपे काफी दिक्कत जाती है नर्सिंग रोल को या फिर साइकेट्रिक टीम को इसको असिस्ट करने के लिए, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम्स के साथ पे जुड़ा हुआ है या वेदर इट इज स्किज़ोफ्रेनिक चाइल्ड, ये काफी डिटेल्स में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है तो उसका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज डिफरेंट है, मैं पहले ही बता दूं। अगर आप एडल्टहुड स्किज़ोफ्रेनिक की बात करते हो तो वंस अगेन द ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आर डिफरेंट। नाम सेम रहेंगे, वंस अगेन नाम सेम रहेंगे, लेकिन उसके नीचे के जो कंटेंट है दैट आर द डिफरेंट, वो आप मॉडल उसको नहीं लगा पाओगे। अगर आपको ओल्ड एज में पाया जाता है स्किज़ोफ्रेनिक, तो उसके जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, स्पेसिफिकली साइकोथेरेपिक मॉडलिटीज, वो आपको डिफरेंट नजर आएंगे। इसके लिए आपको एक ही पैरासिटामोल ट्रीटमेंट जैसे नहीं करते आएगा कि हाँ ठीक है सब कुछ एक बार आ गया सो हमने शुरू कर दिया तो शुरू हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। हर एजेस में, हर फेसेस में स्किज़ोफ्रेनिक के ट्रीटमेंट मॉडलिटीज अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। नो, हाँ या वंदना मैम, हम दोनों ही हैं तो क्यों ना हम लोग एक में के साथ में इंटरेक्ट करें। इज देयर बीनू मैम प्रेजेंट ऑन स्क्रीन? Also there, sir. Yeah, okay. Bimla ma'am? I'm doubtful for her, sir. Yeah, okay. No problem, no issue. Can someone guess कि ये क्या है दो चीजें जो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, ये क्या है? Definitely पेंटिंग्स है, okay? Painting and yes, ये पेंटिंग्स है। चलो, ये अभी अभी की नजर आ रही है आपको कि बहुत पुरानी नजर आ रही है? No, very old, sir. Yes, it's very old. कोई कलर कॉम्बिनेशन, उसके बाद में उसका क्या कहते हैं टेक्सचर, अभी आजकल ये डिजिटल पेंटिंग का जमाना आ गया है तो ये टेक्सचर नहीं रहेंगे शायद। ओके, सो वंदना मैम के साथ में मैं शेयर करना चाहूंगा, आप ये दो पिक्चर में क्या डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं? अच्छा, एक ही बंदे ने निकाला है या दो बंदे अलग अलग है? Seems 2 persons, sir. एक पार्टी आपके ऊपर लग गई, जब भी नागपुर आएंगे तो हम द डिनर पार्टी आपके ऊपर लग गई। Sure, sir. यस नहीं, आप थोड़ा सा गलती कर लिए, ये एक ही बंदे ने पेंटिंग निकाले हुए हैं एंड हिज नेम इज गोया। गोया इज अ वर्ल्ड फेमस पेंटर। द फर्स्ट पिक्चर, द लेडी वाला, वो जो है वो दैट इज अ बिफोर स्किज़ोफ्रेनिया, एंड सेकंड पिक्चर वाज स्किज़ोफ्रेनिया होने के बाद में उन्होंने पेंट किया हुआ पिक्चर है। उसमें आपको बिल्कुल खुले तौर से दिखाई देगा एक कपड़ा झाका हुआ आदमी, देन हिज हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स, कोई तो भी आत्मा उसको ऊपर लेके जा रही है, फलाना फलाना टमका। सो दैट आर द ड्रास्टिक चेंजेस दैट पिक्चर शोज अस कि स्किज़ोफ्रेनिया की अवस्था में उसके इनर फीलिंग का एक्सप्रेशन फॉर्म, प्रेजेंटेशन फॉर्म कितना बदल जाता है ना? दिस इज अ पिक्चर। सो नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको बड़ा अचंभा लगेगा सुन के। हैव यू हर्ड अबाउट द, यस, कैन यू गेस हु इज ही? सॉरी, आप कहोगे यार हमेशा मुझे सवाल पूछते रहते हो, ये नहीं चलेगा, हमने आपको बात करने के बुलाया था और आपने ये क्या कर दिया। Can help in this, Vikram sir is here. Yeah, Vikram sir is there. Yeah, Vikram sir, I'm highly मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ही इज जॉन नैशे, या, और ये उनके लाइफस्टाइल के ऊपर बनी पिक्चर है, द ब्यूटीफुल माइंड। इफ यू आर इंटरेस्टेड in a psychiatry to understand the schizophrenia, the real life experiences, he is a story of John Nashe. John Nashe जी को नोबेल मैथमेटिशियन अवार्डेड किया गया है। जब आप उनके हेलुसिनेशन, डिल्यूजनेशंस को देखोगे मूवी के थ्रू, मराठी में भी एक मूवी है देवराई, तो आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में थेरेपी का यूज कैसे होता है। Just I will explain you the one of the example. जॉन नैशे जी की पत्नी लॉयर थी, और दैट टाइम दैट इज अ स्टोरी ऑफ 1960-50।
तो ही इज अ मैथमेटिशियन, ही वाज सफरिंग फ्रॉम द क्रॉनिक पैरानॉइड आइडियाज, काफी ट्रीटमेंट ले रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, परेशान हो गए थे। तो उनके पास में बहुत सारा पैसा था मिसेस के पास में, तो उन्होंने काफी जगह पे ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, वहां पे जाओ, ड्रग्स दिया करते थे। लेकिन उनके मिसेस को समझ में नहीं आता था कि इस बंदे को संभाले कैसे घर पे, दवाई देके मैं इनको शांत तो रख सकती हूँ, लेकिन इनके साथ में बात कैसे करूँ, ये जब मुझसे बात करते तो मैं उनके साथ में कैसे डील करूँ। तो उस वक्त वो डॉक्टर अब्राहम जी से मिली और उन्होंने कहा कि मैं एक वाइफ के तौर पे क्या कर सकती हूँ, आई फील वेरी बर्डनाइज, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये साइकोथेरेपी के वर्ड्स नहीं समझ में आते, माफ कीजिए, मैं लॉयर हूँ और मुझे जुबानी तौर पे जितना समझता है पति के लिए करना, वो मैं क्या कर सकती हूँ। तो डॉक्टर अब्राहम सर ने उनको दो चीजें बड़ी अच्छी कही, जॉन्स वांट्स टू एक्सप्रेस, नैशे सर को एक्सप्रेस करने दीजिए, आप उसको हाँ भी मत कहिए और ना भी मत कहिए, उनके कोई भी डिलीजन्स को या डिसऑर्गेनाइज थॉट को आप सहमति भी मत दीजिए और उसको आप रिफ्यूज भी मत कीजिए, एंड प्लीज उनको डेली एक्टिविटी में बिजी रखिए। अभी मैं शॉर्ट स्टोरी की तरफ चलता हूँ। व्हेन ही गॉट द नोबेल, तो उनको अनाउंस किया गया नाम के जॉन नैशिप प्लीज कम, अवॉर्डेड बाय द नोबेल सेरेमनी वगैरह। तो कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, क्यों, मुझे सस्पिशियस लग रहा है। तो उसकी मिसेस कहने लगी ओके, तो आप बात करो, उसको बोल दो। तो इसे नहीं, वो लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मुझे फंसाएंगे वहां पे जाने के बाद में। तो कहने लगे यस यू कैन एक्सप्रेस। वो लोग वहां पे गए, जॉन नेशी जी ने अपना नोबेल का मेडल दिया, गले में डाल दिया, उनके पास में माइक रखा गया और पूछा गया हाउ डू यू फील नाउ, ही सेड आई एम सस्पिशियस। एवरीवन वाज शॉक्ड। देन ही सेज या आप कैसे बात कर रहे हो, बिकॉज़ माय वाइफ सेज यस आई एम सफरिंग विद पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, मुझे अभी भी ये ट्रैप लग रहा है। और उसके बाद में पता चला कि एक्सप्रेस करने का फ्रीडम और बेसिक एक्टिविटी को इन्वॉल्व करने का फ्रीडम इन लोगों को देना चाहिए। और बहुत सारे साइकोथेरेपीज में आपको ये बात दिखेगी कॉमन तौर पे। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। या द साइकोथेरेपीज, क्या ये 95 लोगों में कोई बंदा या बंदी साइकोथेरेपी में इंटरेस्टेड है? क्योंकि सिर्फ सुन रहे, मुझे ना ये डिल्यूजनल के जैसे ही लगता है, मैं अकेला इधर से बात कर रहा हूँ, उधर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ऐसा लगता है मैं अकेले तो नहीं बात कर रहा हूँ। No, Okay, no, sir. please. All are there. Okay. Actually, they are Okay. trying to unmute themselves, but they are. Yes, Bhagyashri say yes, sir. Okay, Bhagyashri, we are interested in psychotherapy. Okay, the Bhagyashri, Nancy ma'am, yes, sir. Much interested. Thank you. Nancy, along with the interest, we need a skill and techniques. खाना पकाना आता है, इट्स गुड हैबिट, लेकिन खाने का स्वाद आना चाहिए ना। इट्स अ क्रेविंग ऑन अ ग्लास, साइकोथेरेपी को हम लोग कहते हैं क्रेविंग ऑन अ ग्लास। आप इसके ऊपर कांच के ऊपर अगर कुछ नक्शी काम करना चाहोगे तो कितने धीरे धीरे करोगे ना, एक हल्का भी स्ट्रोक ज्यादा लग गया तो कांच टूट जाएगी, और बिल्कुल स्लो रहा तो कांच के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। सो व्हेनेवर यू वर्क विद द स्किज़ोफ्रेनिया, वी नीड टू वर्क विद द वेरी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, with the very limitations. That's why यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स काफी कम चलते हैं। अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता रहा हूँ। यस, नेक्स्ट स्लाइड। कोई मुझे बता सकेगा कि ये आप क्या समझते हो कि साइकोथेरेपी में कौन से मॉडल्स यूज किए जाएंगे सकते हैं? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर? वंदना मैम, कैन यू सी? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Psychosocial. अभी Yes. Exactly. This is the psychotherapy. Okay. मैं पहले बता दूं कि एक्यूट स्टेज में ये काम नहीं आने वाली है। एक्यूट स्टेज नो। सो एक्यूट स्टेज में क्या किया जाएगा? द फैमिली थेरेपी, और वी कैन से द साइको एजुकेशन, द फर्स्ट थिंग। जैसे डॉक्टर विक्रम सर ने कहा था कि नो, ईसीटी के लिए भी डरता है आदमी जाने से पहले। सो दैट टाइम द नर्सिंग रोल इज द साइको एजुकेट टू द फैमिली मेंबर्स। द फैमिली मेंबर में आपको ढूंढना पड़ेगा हु इज अ की पर्सन जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग की जिम्मेदारी है। आप उसको प्रॉपर साइको एजुकेशन दे, बीमारी के बारे में इनसाइट दे, उसको शेयरिंग करे उसके साथ में। सो द फर्स्ट स्टेप इज अ साइको एजुकेशन टू द फैमिली मेंबर्स। हाँ, इसके नीचे जो सीबीटी लिखा गया है, द सी एंड टी, द सीबीटी स्टैंड फॉर द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ओके, इसमें दो पार्ट रहेंगे, सीटी एंड बीटी।
द कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी। बट बी रिमेंबर, आपको एक्यूट स्टेज में क्लाइंट के साथ में साइकोथेरेपी का सीबीटी मॉडल यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप फैमिली मेंबर्स के साथ में सीटी का मॉडल यूज कर सकते हो along with the psycho education। सीटी मतलब क्या? तो वॉट एवर द कॉग्निटिव बिलीफ सिस्टम दे हैव, उनकी जो धारणा है, उनकी जो समझ है, हमारे बच्चे को शायद ये बीमारी इसकी वजह से तो नहीं होगी, द मिस इंटरप्रिटेशन है, उनकी जो थोड़ा सा उनको डिल्यूजन्स नहीं पता रहता है, उनको डिल्यूजन्स को तो वो शायद समझते कि शायद ये अचानक से कैसे क्या हो सकता है, नहीं। तो रियलिटी चेक के लिए आपको सीटी प्रोसेस का यहाँ पे काफी ज्यादा रोल दिया जा सकता है। एट दैट सेम टाइम आप बीटी यानी बिहेवियरल थेरेपी के छोटे छोटे जो टिप्स है वो यूज कर सकते हो फॉर द फैमिली मेंबर, लेकिन सारे फैमिली मेंबर के साथ में नहीं। वंस अगेन आई रिपीट, विद द केयर ओनली, द की रिलेटिव, अदरवाइज आपकी बहुत सारी एनर्जी चली जाएगी। अच्छा, आपके क्लाइंट के ईसीटीज हो चुके हैं, ही इज अंडर द ट्रीटमेंट from the more than the 6 months or the 8 months, all the acute symptoms are become the normal. So what should be the next line of treatment? Yes, you can go for them for the group therapy. There is a hetero group or homo group. Mostly I suggest the homogeneous group is good for them. Homogeneous group में क्या होता है? They share their all the thoughts. इसमें कंट्रोवर्सी है रूपा मैम, मैं आपको बता दूं, काफी सारे रिसर्च पेपर में ऐसा गया है कि कैथारसिस इज नॉट गुड फॉर द स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स। Am I audible or is there any problem? Yes, you are audible. Yeah. Okay. So अभी आपका क्लाइंट 6 या 8 मंथ के ऊपर ट्रीटमेंट ले रहा है, काफी स्टेटमेंट उसके ट्रीटमेंट के सिम्टम स्टेबल है, तो आप ग्रुप थेरेपी की तरफ जा सकते हो। होमो और हेट्रो ऐसे दोनों ग्रुप्स हो सकते हैं। माय सजेशन इज दिस कि आप होमो ग्रुप तैयार करें, होमो यानी एक ही मनस्थिति का ग्रुप तैयार करें और छोटी छोटी ग्रुप एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करें। अब ये ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने के कारण मला कोणाच्या तरी भांडणाचा आवाज ऐकू येतोय। प्लीज, शायद कुछ noises there. Thank you. Participants are requested to mute themselves. चले, ये बड़ा अच्छा है वंदना मैम, पता है हम किसका भी मुंह बंद कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा तरीका है हमारे पास में। नहीं, ये आमतौर पे आम जिंदगी में होना चाहिए, सो इट इज वेरी नाइस, लेकिन नहीं होता है। ओके, सो ग्रुप थेरेपी इज अ गुड। सो ग्रुप थेरेपी में आप छोटी छोटी एक्टिविटीज में अगर उनको बिजी रखो तो उनकी जो एक फिजिकल स्टिफनेस आया हुआ है वो थोड़ा सा मोबिलाइज होने के लिए थोड़ा सा उनको इजी हो जाएगा। देन फिर आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि द सिम्टम्स आर रिड्यूस एंड द ड्यूरेशन इज मोर देन द 9 मंथ और वो थोड़ा थोड़ा भी इनसाइट की तरफ चल रहा है, थोड़ा उसको समझ में आ रहा है, उनके अनशेकेबल बिलीफ्स को अभी वो थोड़ा कंट्रोल कर पा रहा है, देन इफ यू आर द स्किलफुल पर्सन प्लीज गो फॉर द सीबीटी, अदरवाइज नॉट। Okay, so if you're the skillful in a CBT, if your client have a little bit insight, he can differentiate between the belief and delusions, so go through the CBT. Otherwise, you go for the social therapy. It is a very nice therapy. Along with the group therapy and the social therapy, the client results are very fruitful, highly fruitful. Okay, अब धीरे धीरे ये तो क्लाइंट के साथ में हो रहा है, हम लोगों ने पहले फैमिली थेरेपी ली हुई थी, तो अब एक सेशन आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के करने चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपको फैमिली थेरेपी के साथ में अटैच कर दो तो काफी रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग उनको 24/7 नहीं हो सकते। सेशन कितना देर तक चलेगा? 45 मिनट्स, मोर देन मोर 1 आवर, लेकिन उसके बाद में उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये सबसे बड़ा एक फैक्टर रहेगा। अशी खूप सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आहेत, मुंबई पुणे में तो बहुत सारे चलते हैं, रायपुर में शायद एक है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन नागपुर में भी है एक ग्रुप।
और उसका नाम है त्रिदल। आज उनका इनॉग्रेशन था त्रिदल का। सो दे आर अवॉर्डेड द पर्सन द हु इज वेरी वॉरियर, दिस इज द वॉरियर। हाँ, उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया के साथ में अच्छा डील किया है, वेल डील किया है, तो उनको वो अवॉर्डेड करते हैं, यस यू आर द रोल मॉडल नाउ। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द वेरी इसेंशियल फॉर देयर। ओके, अगर आप अभी नेक्स्ट टाइम चलते हैं, 20 के एज में स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है, 5 साल तक उस बंदे का ट्रीटमेंट में चला गया, अब धीरे धीरे उसके जो स्किल्स थे वो काफी डिटोरेट हो चुके हैं, सोशल स्किल, वोकेशनल स्किल्स, देन वी नीड अ सोशल स्किल ट्रेनिंग। 4 जनों में बात करना, अपने विचारों को सामने रखना, सामने वाले विचारों को समझ लेना, उसके बाद में रियलिटी चेक में जाना, उसके बाद में उनके जो वोकेशनल प्रॉब्लम्स है, क्राइसिस है, स्किल्स है, उसके ऊपर काम करें। सो दीज आर द 2 मॉडल्स विच इज हाईली यूजफुल। एट दैट सेम टाइम मैं आपको पैरेलल चला रहा हूं। ओके, द फर्स्ट ट्रैक of the therapeutic model is for the client and the second track is for their key relative. Okay, अब second track में क्या है? Problem solving strategies. Yes, problem solving strategies अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ में चालू रखते हो और इधर आपके क्लाइंट का वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, सोशल स्किल ट्रेनिंग चालू है, you get the good result. Your relapsing rate was low. Relapsing rate was low. उसकी जो साइकोटिक सिम्टम्स की इंटेंसिटी है वो कम होगी, एंड उसका जो बर्डन है, सोशल बर्डन है, वो भी कम हो जाएगा ड्यू टू दिस। सो आपको एज नर्सिंग जब भी क्लाइंट को सिलेक्ट करना है, उसके साथ में अलॉन्ग द साइकोफार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट, साइकोथेरेपी का ये लगाना है, तो दिस आर द मॉडल फॉर यू, दिस द टेबल फॉर यू। ओके, एंड द सपोर्टिव एनरोलमेंट and assertive community treatment, sorry but to say due to the time duration मैं इसको कट कर रहा हूं। इसका सही कारण एक और है कि हमारे समाज में इस बात की अभी तक पूरी तरीके से लोगों को नीड ही नहीं पता चली है। सो कम्युनिटी ट्रीटमेंट्स और असर्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट्स, इसको हम लोग बाद में रखते हैं, लेकिन हाँ आप इतना तो कर सकते हो, जब क्लाइंट आपके पास में आता है इन एक्यूट कंडीशन, प्लीज गो फॉर द साइको एजुकेशन फॉर द फैमिली मेंबर्स। अगर थोड़ा थोड़ा इमोशन एक्सप्रेस लेवल फादर का या मदर का थोड़ा बैलेंस है, इमोशन हाई एक्सप्रेस लेवल नहीं है, इज बैलेंस्ड, प्लीज गो फॉर द सीबीटी। सीटी इज गुड फॉर देम। उनकी जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको रिमॉडल करो, उनके साथ में बात करो। एट द सेम टाइम आप क्लाइंट को ग्रुप थेरेपी और सोशल थेरेपी में अटैच करो। आप ग्रुप थेरेपी को आप होमोजीनियस ग्रुप में कर सकते हो, हेट्रोजीनियस ग्रुप में कर सकते हो, सोशल थेरेपी में कर सकते हो, ये आप उनके क्लाइंट के साथ में कर सकते हो। वंस अगेन यू टर्न अप टू द क्लाइंट्स फैमिली मेंबर। अब फैमिली मेंबर और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये दोनों को एक साथ मर्ज कर दो, ये बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मॉडल रहेगा। और आप हमारे मानस में ना मैम, मंडे इज अ ग्रुप थेरेपी डे फॉर द स्किज़ोफ्रेनिया। बाबा रिहैबिलिटेशन सेंटर में हम लोगों ने इनका नाम रखा है यश ग्रुप। उनको वी नेवर कॉल देम द पेशेंट्स, वी कॉल देम द सहभागी, जो उपचार में सहभाग लेते हैं, द पार्टिसिपेंट्स, सो वी कैन कॉल देम द सहभागी। तो उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप अलॉन्ग विद द साइको फैमिली थेरेपी। तो ये दोनों चीजें आपको पैरेलली चलानी पड़ेगी। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि 6 to 8 months हो गए हैं, एक्यूट सिम्टम्स काफी कम हो चुके हैं, क्लाइंट को बिलीफ सिस्टम और डिलीजेंस में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है, वो समझ पाने का प्रयास कर रहा है, देन गो फॉर द सीटी। इट इज हाईली गुड। अगर आपको सीटी वेल ट्रेन नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, यू गो फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। अब फिर से आपको फैमिली मेंबर्स की तरफ फोकस करना है। आपको याद रखना है, किसी भी परिवार में अगर मानसिक बीमारी पाई जाती है एक व्यक्ति को, तो उसका भुगतान 3 व्यक्ति को करना पड़ता है। सो दे आर द मोर बर्डनाइज्ड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, जब भी इनको गुस्सा आ जाए तो हम लोग ने कैसे डील करना चाहिए, जब भी इनको ऐसा लगे कि नहीं रियलिटी और मिसट्रस्ट के बीच में लड़ाई चालू है, तो उस वक्त हमारे घर का वातावरण किस तरीके से रखना चाहिए, उनको कितना रिबलिटी देना चाहिए, क्या सीरियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में उनको इकोनॉमिकल इश्यूज हैंडल कर देने चाहिए या नहीं कर देने चाहिए, क्या उनको उनकी लायबिलिटी देनी चाहिए चेक के ऊपर साइन करने की, ये सब बातों को आपको गौर से डॉक्यूमेंटेट करना पड़ता है, और डॉक्यूमेंटेट करने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। फिर से मैं आपको बता दूं,
एक्यूट स्टेज में ये सब नहीं होगा, लेकिन रेमिजन स्टेज में आप ये कर सकते हो। चाइल्डहुड के लिए अलग सीबीटी ट्रीटमेंट मॉडल है, एडल्ट के लिए अलग है और ओल्ड एज के लिए अलग है। ओके, हर वक्त आप अलग अलग मॉडल अलग अलग है, उसके कंटेंट अलग अलग है। ओके, I supposed to be this was enough today for me because it's already 1:36. Okay, so it is more than comfort for me. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. The session was. I say thank you. Yes, thank you, sir, for the enlightening session and informative session. नहीं मैं एक ड्यू तो आपके ऊपर है। Social intervention part was very nice to listen from you. मैम आपके ऊपर एक ड्यू है, प्रिंसिपल मैम के ऊपर एक ड्यू है, एक ड्यू गोया का आपके ऊपर है, और प्रिंसिपल मैडम अभी तक बाबा सेंटर नहीं आए हैं। She promised me कि हाँ yes. I'll come at the earliest possible, जितनी भी जल्दी हो सके. And I love to meet you all, sir. Thank you so much, sir, for the informative session. Thank you, ma'am. The first time itself, you took all our attention and emotions, as we are the part of Maharishi Karve Sanstha. The session is open for queries. If anyone have any queries related to the session, they can ask. I got one query from one participant. Which approach is best for schizophrenia? Which approach is best for schizophrenia? In which condition? Acute condition में तो psychoeducation. Yeah, probably they are asking मतलब first line. First जो है so psychoeducation. अगर teachers को भी psychoeducation देते आना चाहिए, nursing staff को भी देते आना चाहिए, ये सब चीजों का एक सोशल फील्ड वर्क होना चाहिए, लेकिन उसमें भारी भारी शब्दों का प्रयोग ना करें। स्किज़ोफ्रेनिया का स्पेलिंग ना पूछे उनको, नहीं तो वो डर जाएंगे बेचारे। सिंपल है, आप उनको बताइए कि इनकी विचारों की सुसूत्रता कहीं जा रही है, माफ कीजिए, इनके विचार पहले जैसे नहीं लग रहे हैं। इतनी सादी और सरल भाषा में अगर आप विनम्रता से बात करो तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में ऐसे पूछने वाला सवाल नहीं आएगा कि भाई ये विनम्रता कौन है, तो वो इजी हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया नाम लेके जाओगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। I think queries are over. People are mentioning psychoeducation is the need of hour. I hope you can read the chat, Pankaj sir. मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सर्टिफिकेट वाले मुझे दिखाई दे रहे ज्यादा से ज्यादा, इसलिए मैं उसको हाथ नहीं लगा रहा हूँ। यू कैन रीड इट। यस, मैं अपना पूरा एनर्जी आंसरिंग में लगाऊंगा। यस, यू कैन सिलेक्ट द क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। I already asked what Vandana Goyal madam asking. She was just unable. I had seen her message first. So lead towards another part of the panel discussion. Let me share. Allow me to share my screen. Okay. So our next panelist is Dr. Binu Matthew. Madam is currently working as principal in College of Nursing, AIMS College of Nursing. She had completed her PhD in mental health nursing from IGNOU, Delhi in 2015 under the guidance of none other than Dr. Bimla Kapoor. Madam is always an enthusiastic learner. She's always a bright student and always holds first rank during her studies. And after she got awarded by Maharashtra Mandal Award in 1996 for her academic excellence. Madam is very keen and had good interest in research. She was awarded first prize for best scientific paper presentation in first joint conference of psychiatry nurses and psychologists and social workers conducted by Indian Psychiatric Society in 2009.
Madam also participated in International Quality Circle Convention and bagged Best Award in South Korea in 2005. She was also awarded the Best Teacher Award by Bhilai Education Society, Durg in 2011. Madam is an editorial board member for many national and international journals. Madam also, due to her innovative nature, prepared proposal for Center of Excellence Nursing Sciences initiative along with AIIMS Delhi and all 6 new AIIMS branches in March 2020 under Niti Aayog by 2022, modeled on similar centers in the world. Madam also prepared proposal of simulation lab along with the team for College of Nursing, AIIMS Raipur. Dear ma'am, having you with us is a great honor and I am very privileged to be a student of you. Dear ma'am, we are highly delighted and I request you to kindly take over the mic and address the gathering. Thank you so much. Thank you so much. Am I audible? Yes, ma'am, clearly audible. So I will share my slide. Sure, ma'am. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So a very good afternoon to one and all. Due to shortage of time, I will just cut short few things which has already been emphasized, and I will focus on my important aspect, that is adherence. Yes. The topic given to me is nurse-led interventions to enhance adherence to treatment in schizophrenic patients. तो adherence मतलब है कि हम कैसे सहभागी हो सकते हैं और adhere कर सकते हैं ट्रीटमेंट रेजिमेंट के साथ, ताकि एक भी पेशेंट फेलियर में ना जाए और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब ना हो. So greetings, warm greetings from AIIMS Raipur to Rupa ma'am. She is my student, my favorite student. It's my privilege to be your student, and it's my privilege to see you and on this platform, ma'am. I'm so happy. Thank you so much. Thank you so much for accepting the. Thank you. You are a meritorious student. You are, and Vandana ma'am also. All because of you and my teachers as well, and you are one of my role model, ma'am. No doubt in that. Thank you. So much. Because of you only, I have agreed to take this session. I don't know how much justice मैं कर पाऊंगी. I will try my level best. No, ma'am, we are happy to hear you again, ma'am. It's really a great honor to us. Thank you, dear. So I'm thankful to the Nursing Teachers Association, and this is a very good forum which has been developed, as Bimla ma'am has already told, and I'm thankful that you have called Bimla ma'am because she is my guide and my mentor and my teacher, and I'm thankful to one and all for giving me valuable time. So welcome to the presentation. Quote, those of us who have not had this disease should ask ourselves, for example, how would we feel if our brain began playing tricks on us? If unseen voices shouted at us? If we lost the capacity to feel emotions? And if we lost the ability to reason logically? E. Fuller Torre, unquote. So this person has rightly told us, if we are standing in their position, then only we can understand that it is a real thing, that illusions are real, hallucination real hai, har cheez real hai unke liye. Highlights are not moving. Excuse me. Slides are not changing. Is it now moving? Yes, ma'am. Okay. So the highlights of today's presentation is introduction. I will deal with the introduction, magnitude of the problem, treatment options available. First three things I think all the previous speakers ने पहले ही बता दिया तीनों चीजों के बारे में, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं फोकस करूंगी. Next is meaning of adherence, reasons for non-adherence to the treatment regimen, and what are the nursing interventions to enhance the adherence to treatment. जैसे आप लोगों सबको मालूम है, पहले भी बताया गया, वर्ल्ड May 24th is World Schizophrenia Day. So a person with schizophrenia is not different from others. हमारे बीच में है, हमें भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है. Let's bust the myth and spread the truth. Introduction.
According to WHO, psychiatric disorders represent a leading cause of morbidity and mortality worldwide. Globally, approximately 970 million individuals they suffer from diagnosed psychiatric disorder. तो आप उसकी मैग्नीट्यूड देख सकते हैं कितनी ज्यादा है, जो आप पहले डिस्कस हो चुकी है. तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के साथ हमें ये देखना है कि व्हाट आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस. बाकी बीमारियों से फर्क क्या है साइकोटिक डिसऑर्डर्स में, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में? बिकॉज दे हैव रिड्यूस्ड इंडिविजुअल वेलबींग, फैमिली के ऊपर एक बर्डन होते हैं, एंड दे have barrier, as sir has previously told, Dr. Pankaj has already told that there is a barrier to employment and financial stability, and various options are available. बहुत सारे treatment options available है. Then also the patient, there is a relapse in this condition and the quality of the life is poor. So why it is happening? Why this relapse is happening? As sir has told rightly that in India, psychiatric nurses along with the other professionals, उनकी जिम्मेदारी है कि patient को psycho education दे and help the person to promote adherence to these psychotropic medications. Hospitalization के दौरान, discharge के दौरान, discharge planning के दौरान, तो हमें patient के साथ full time हमको patient के साथ involved होना है. Key facts according to WHO मैं उसको छोड़ रही हूँ क्योंकि सबने आपको बता दिया है कि क्या होता है, स्टिग्मा होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सब अब हम भी जानते हैं. लास्ट पॉइंट जो इसमें स्लाइड में दिया है वो मैं बस बताना चाहूंगी. A range of effective care options for people with schizophrenia exist, and at least 1 in 3 people with schizophrenia will be able to fully recover. अगर पूरे अपन 2 पेशेंट को लॉस कर रहे हैं because patients are not adhering to the treatment, तो ये गैप कहाँ पे है? ये गैप हमें आइडेंटिफाई करना है कि तीनों के तीनों क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं, 3 पेशेंट में से एक ही क्यों ठीक हो रहा है. So this I am leaving magnitude and impact already told by Bimla Kapoor ma'am and everybody. Now I will come to my topic, that is adherence. Adherence का मतलब क्या होता है? जैसे आपको आज ये पैनल डिस्कशन पे रजिस्टर करना था डेलीगेट्स को, तो आपने क्या किया? आपने वो रजिस्टर किया और लिंक जो मिला आपको उसमें आपने ज्वाइन किया. सो दैट इज एडहेरेंस. तो कुछ रूल्स है, जैसा आपको टीचर्स ने बताया आप वो स्टेप्स फॉलो किए, उसी को कहते हैं एडहेरेंस. तो एडहेरेंस क्या होता है? अगर पेशेंट को 2 टाइम दवाई खाना है तो 2 टाइम दवाई खाना है. दैट इज एडहेरेंस. सो when your behavior is coinciding with the medical advice which is given to you. और एडहेरेंस की 3 कंपोनेंट होते हैं. शुरुआत के दौरान इनिशिएशन, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जब आप मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के रूप में रहते हैं तब एडहेरेंस की जरूरत होती है, एंड डिसकंटिन्यूएशन, कब तक ये दवाइयां देना है, दैट ऑल्सो शोज एडहेरेंस. सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एडहेरेंस. एडहेरेंस थेरेपी होता क्या है? ये है नर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल. एडहेरेंस थेरेपी सीक्स टू फैसिलिटेट ए प्रोसेस ऑफ शेयर्ड डिसीजन मेकिंग. जैसे सर ने बताया, पंकज सर ने बताया था कि हाउ टू हैव शेयर्ड डिसीजन मेकिंग. पेशेंट को इन्वॉल्व करना है हमको. How we can involve the patient and their relatives to make a decision. तो इस adherence therapy के पीछे क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? Central is the theory that when patients make shared choices, अगर पेशेंट को इन्वॉल्व किया जाए उनके ट्रीटमेंट में, कितने प्रोफेशनल दे आर लाइकली टू स्टिक विद देम, बिकॉज वो उनका पर्सनल हो जाता है, उनका ओपिनियन लिया जाता है, तो वो उनके लिए एक बाध्यता होता है, दे शुड बी पर्सनली ओन्ड एंड इट इज मीनिंगफुल टू देम. तो इसलिए हमेशा पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करना है. नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पिंग पेशेंट्स मैनेज देयर मेडिकेशन और थेरेपी इज सेंट्रल रोल ऑफ द वर्क ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सेस. मेडिकेशन एडहेरेंस WHO ने भी बहुत डेफिनेशन दिया है, सेम है, ना कि सिर्फ दवाई है. टेकिंग मेडिकेशंस, डाइट भी हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस भी हो सकता है, कोई भी चीज व्हेन वी आर इनकॉर्पोरेटिंग एंड डूइंग अलोंग विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट. बहुत सारी चीजें हम भी करते होंगे, बट वेदर इट इज इन कॉन्कॉर्डेंस या यूनिटी में है, उनके साथ रिकमेंडेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन इट इज medication adherence or adherence, right. So emerge एक रिपोर्टिंग गाइडलाइन है जो यूरोपियन कंट्रीज में यूज होता है, जहां पे मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब है द प्रोसेस बाय विच द पेशेंट्स टेक देयर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड
एंड कंसेप्चुलाइज द मेडिकेशन कंसिस्ट ऑफ 3 फेज: इनिशिएशन, शुरुआत करना, इम्प्लीमेंटेशन एंड परसिस्टेंस. शुरू तो कर देंगे, बट परसिस्टेंस इज द रोल ऑफ मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कि वो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करे, बिकॉज दिस इज ए क्रॉनिक डिजीज एंड इट नीड्स मेडिकेशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो इसलिए एमर्ज बहुत सारी क्राइटेरिया बनाया है जिसके द्वारा मेजर कर सकते हैं कि वेदर द पेशेंट इज एडहरिंग टू द ट्रीटमेंट रेजिमेन और नॉट. जैसे एक दो क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, जैसे दवाइयां एक स्किप कर दिया, डोज भूल गया खाने के लिए, राइट? सो लाइक दिस few criteria are there which will help you to achieve this medication adherence. And prevalence of medication non-adherence सबसे ज्यादा psychiatric population में है, and that too in schizophrenia patient. उसका कारण क्या है? Because insight इनमें नहीं रहता. अब जैसे सर ने बताया, there is positive symptom, there is negative symptom, there is third important चीज इसमें है cognitive symptoms भी रहते हैं. तो उनकी रीजनिंग एबिलिटी, बहुत सारी जो एबिलिटीज है, थिंकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, बहुत सारी एबिलिटीज असर करती है. तो इस कारण ये दवाइयां छोड़ देते हैं, राइट? सो इंसाइट इज एब्सेंट इन सच पेशेंट्स. सो दिस लीड्स टू पुअर ट्रीटमेंट आउटकम्स. तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पेशेंट का आउटकम अच्छा होना. आउटकम अच्छा क्या होगा? पेशेंट रिकवर कर रहा है, पेशेंट ट्रीटमेंट पे है, रिलैप्स नहीं हो रहा है. दैट इज गुड ट्रीटमेंट आउटकम्स. But if the patient is not adhering, और वो दवाइयां नहीं ले रहा है या थेरेपी नहीं ले रहा है, तो what will happen? There will be an increase in psychotic symptoms, disease relapse, criminal arrest भी हो सकते हैं, because वो उनकी इंसाइट नहीं है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, रीहॉस्पिटलाइजेशन हो सकते हैं, एज वेल एज सब्सटेंस यूज, एज सर ने बताया वो भी हो सकता है. सब्सटेंस यूज एंड अब्यूज इज मोर कॉमन इन स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक सेट ऑफ दवाइयां जो उनके लिए चालू किया था वो उन्होंने छोड़ दिया, तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है. दे हैव टू स्टार्ट सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो उसके कारण उनका ट्रीटमेंट बढ़ जाता है. तो ये है पुअर ट्रीटमेंट आउटकम्स. तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं नॉन एडहेरेंस के पेशेंट्स पे? तो पहला कारण पेशेंट के अंदर में ही रहता है. फर्स्ट इज अंडर पेशेंट्स, सेकेंड इज क्लिनिकल, थर्ड ट्रीटमेंट, देन एनवायरमेंटल, राइट? तो पहला पेशेंट के अंदर क्या क्या चीज है, जैसे सर ने बताया ये पॉइंट, सोशियो इकोनॉमिक. जैसे अभी न्यू जो साइकोटिक मेडिकेशंस है, दे आर कॉस्टली, तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है या इंडिविजुअल लेवल फैक्टर हो सकता है. फिर पेशेंट की कुछ कुछ बैरियर्स होती है, उनकी खुद की स्टिग्मा, नेगेटिव एटीट्यूड, साइड इफेक्ट्स, या उनकी जानकारी उतनी नहीं है, हेल्थ लिटरेसी लेवल कम है उनकी, फाइनेंशियल इश्यूज आर देयर, एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट. फिर क्लिनिकल रिलेटेड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? पेशेंट की इलनेस कितनी सीवियर है, कौन सी टाइप में है, कौन से स्टेज में आया, इनिशियल में आया. सो दैट ऑल्सो डिटरमिन्स एज ऑफ ऑनसेट. जितना जल्दी स्किज़ोफ्रेनिया होता है, व्हाट विल हैपन, प्रोग्नोसिस उतना पुअर रहता है, राइट? बिकॉज उनकी जो एबिलिटीज है वो डेवलप नहीं हुई रहती है, राइट? उनकी मेच्योरिटी लेवल कम रहती है. सो ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस एंड द एज ऑफ ऑनसेट ऑल्सो प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. These are the clinical related factors. Then treatment factors हो सकता है, कितनी दवाइयां देना है, कितने दिन में देना है, और साइड इफेक्ट्स. एंड लास्ट है environment related factors. जैसे वंदना मैम ने सही बताया कि एक पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है, it may be different, it has to be tailored. Every person has to be given a tailored regimen according to patient's condition. दवाइयां वही है, but how to tailor it according to the पेशेंट, और उसको सोशल सपोर्ट है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो एन एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर. इन इंडिया क्लिनिकल मैनेजमेंट दवाइयों के साथ हम क्या करते हैं, साइको सोशल इंटरवेंशन, जो सर ने बताया, मैं वो पॉइंट रिव्यू कर रही हूँ. तो साइको सोशल थेरेपीज जो होते हैं वो देना ही है. तो दवाइयों के साथ ही नहीं, हमें एडहरेंस हर रेजिमेंट के साथ होना चाहिए, खाने पीने से लेके एवरीथिंग वी हैव टू एडहर. Then only is a total adherence to the treatment regimen. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और ये सब रिकवरी के लिए मदद करते हैं पेशेंट्स को, है ना? लाइफ स्किल भी सर ने बताया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज भी बताया सर ने. सो ऑल द थेरेपीज आर देयर, राइट? और सर ने ये भी बताया, मैं जो स्लाइड में बताना चाह रही थी, अच्छा मेरा काम हल्का हो गया,
डिफरेंट फोकस इज देयर इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फेज 1 में, एक्यूट फेज में हम साइकोथेरेपी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमको पेशेंट को स्टेबलाइज करना रहता है। फेज 1 में एक्यूट और सब एक्यूट आता है, और हमारा काम है क्राइसिस इंटरवेंशन, सेफ्टी एंड टू मैनेज द एक्यूट सिम्टम्स। सेकेंड फेज है स्टेबलाइजेशन फेज, इसमें हम उनको मदद कर सकते हैं, गिव और हेल्प दम एंड मेक दम एक्सेप्ट द इलनेस, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा सकते हैं। और फेज 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे सर ने बताया, जहाँ पे हम मेंटेनेंस ऑफ मेडिकेशन बता सकते हैं, स्किल उनका बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ट्रीटमेंट फोकस इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फेजेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो नर्सेस को हर फेज में उनका रोल है, फेज 1 में भी रोल है, फेज 2 में भी रोल है, और फेज 3 में भी उनका रोल है। मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रही। Psychiatric nursing practice nowadays, they should know about clinical psychopharmacology, safe practice of clinical psychopharmacology, because new drugs are developed daily. बहुत सारे clinical trial होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ develop होती है, तो हमें भी पता होना चाहिए कि क्या क्या दवाइयाँ हैं, and what are the medicines which have what side effects, how to manage, all those things we should know. And in the advanced level, we should have the prescriptive practice also, right? Now, what are the risk factors for patients medication non-adherence? इसमें से कुछ points मैं आपको बताना चाहूंगी। बहुत सारे risk factors है, जैसे एक है कि therapeutic alliance नहीं बनाया, that is the first important. Therapeutic relationship बनाना है, clinician को, healthcare professionals को patient के साथ discuss करना, जैसे मैंने आपको shared decision making बताया, right? तो unless you make a therapeutic alliance, आप patient को अपने confidence में नहीं ले सकते, relatives को अपने confidence में नहीं ले सकते। सेकेंड है डीवैल्यूएशन ऑफ साइकोथेरेपी बाय फार्माकोथेरेपी बाय द सपोर्ट स्टाफ। अपन खुद अगर नेगेटिव बोल रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट है, ऐसे ही होता है, इफ वी आर नॉट कन्विंस्ड, वी विल नॉट बी एबल टू कन्विंस द पेशेंट, राइट। सो वी शुड नो द साइड इफेक्ट एंड हाउ टू मैनेज द साइड इफेक्ट एंड हाउ टू मॉनिटर द साइड इफेक्ट्स। थर्ड, inadequate patient and family education, जैसे सर ने बताया, दोनों को देने की जरूरत है, फैमिली एजुकेशन भी देना है एंड पेशेंट एजुकेशन भी देना है। देन नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है इनसेंसिटिव, पेशेंट के साथ पेशेंट की बिलीव्स, पेशेंट के बारे में कोई नहीं सुन रहा है, पेशेंट क्या बोलना चाह रहा है, नोबडी इज लिसनिंग, सो वी शुड बी सेंसिटिव टू व्हाट द पेशेंट इज टेलिंग। Like that, many points are there. This slide I will share with you. Because of lack of time, I'm not able to explain all the points, but these are some of the risk factors for medication non-adherence. तो ये सब points हमको ध्यान रखना है ताकि patient दवाई ना छोड़े। Now, how we can improve it? First, सबसे important है mutual treatment plan. You have to include them in decision making. Second, अगर उनकी negative belief है तो हमको उसको करेक्ट करने की जरूरत है। लैक ऑफ इंसाइट है तो इंसाइट डेवलप करने की जरूरत है। फॉरगेटिंग टू टेक मेडिकेशन, तो हम बता सकते हैं कि ब्लॉक कर सकते हैं, मोबाइल में कुछ अलार्म कर सकते हैं, राइट। तो द पेशेंट मे बी एबल टू टेक द मेडिकेशंस ऑन टाइम, प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, राइट। सो दिस आर सम ऑफ द वे बाय विच वी कैन इंप्रूव द मेडिकेशन एडहेरेंस। तो for that you have to involve them and understand from the patient's perspective, तभी patient सुनेगा। अगर patient for example, जब मैंने एक बार HIV का क्लास लिया था तो एक ट्रक ड्राइवर था patient, तो patient को बोला कि दवाई सुबह खाना और शाम को खाना, लेकिन patient को याद ही नहीं, क्योंकि उसके साथ उसका हेल्पर को हमको पूछना पड़ा कि क्या टाइम में आपके साथ हेल्पर रहेगा तो आपको याद दिला सकता है। So that is a practical solution, right? The helper can tell the ट्रक ड्राइवर टू टेक द मेडिकेशन ऑन टाइम, सो वो प्रॉम्प्ट दे सकता है, मोबाइल में प्रॉम्प्ट हो सकता है, राइट। सो यू हैव टू सी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स प्रोफेशन, पेशेंट्स ऑक्यूपेशन, एंड यू हैव टू मेक देम एडहेयर टू द ट्रीटमेंट रेजिमेन, राइट। ये तो आपको सबको मालूम है, मेडिकेशन एडहेरेंस का ट्रेनिंग होना चाहिए, साइकियाट्री में स्पेशली होना चाहिए फॉर नर्सेस, so that the patients will not leave the medication, right? And you should have a good nurse-patient relationship, and the alliance, the therapeutic communication should be very good, and find out the reason for that. Then psychoeducation sir ने बताया होना चाहिए, तो क्या 4 goals हमारा होना चाहिए psychoeducation का। पहला है information देना है, second emotional discharge, तो they want to express their emotion, so allow them to
वेंटिलेट देयर इमोशन, हमारे इमोशंस को वेंटिलेट करने के लिए उनको मौका देना है, राइट। देन थर्ड इज सपोर्ट मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हमको जानकारी देना है। एंड यूज सेल्फ हेल्प ग्रुप स्ट्रेटेजी, जैसे सर ने बताया सेल्फ हेल्प ग्रुप का लेना है हमको, फैमिली ग्रुप और जो भी थेरेपीज है उसमें हमको इन्वॉल्व होना है। एंड हाउ टू कीप आवरसेल्व्स एक्टिव, ये भी सर ने बताया, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। सो नर्सेस हैज अ रोल इन दिस थेरेपीज आल्सो, मोटिवेट करना उनकी एक रोल है। WHO has done a lot and we know that they have done so many projects. One commendable project is WHO Quality Rights Project, जिसपे उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, सोशल केयर फैसिलिटीज बनाया है, so that we can act as an advocate for the mentally ill person. स्किज़ोफ्रेनिया का अवेयरनेस बढ़ाने का रूपा ने बता दिया ऑलरेडी। हमको हमारा जानकारी होना चाहिए, हमको वर्ड्स यूज करना है और वर्ड्स के द्वारा दूसरों को हील करना है, हीलिंग के लिए वर्ड्स को यूज करना है, राइट। दैट इज द रोड टू रिकवरी। रिकवरी हुई द अल्टीमेट, पूरे प्रोफेशनल्स वही चाहते हैं कि पेशेंट रिकवर होके वापस जाए, सेल्फ अपनी जिंदगी जिए। दैट इज व्हाट एवरीबडी डिसाइड्स, राइट। सो रिकवरी इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज थ्रू विच क्लाइंट इंप्रूव देयर हेल्थ एंड वेलनेस। तो हम अपनी पेशेंट अपने ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड बनाना है हमको पेशेंट को। दैट इज व्हाट इज आवर फाइनल मोटो। देन पिल मेडिसिन आर देयर, जैसे सर ने बताया कि लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल ड्रग्स आर आल्सो, डिपोट ड्रग्स आर आल्सो अवेलेबल, राइट। तो हम उनको चॉइस दे सकते हैं, अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है और हम उनको चॉइस दे सकते हैं, तो क्या वीकली उनको 3 बार ही लेना पड़ेगा या 2 बार ही लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग डेली। तो इसको कहते हैं पिल फैटिग। पिल फैटिग आप लोग जानते होंगे ना, जैसे 5 दिन एंटीबायोटिक खाना है, क्या किसी को अभी कोविड आया होगा तो आप लोग जानते होंगे इतना दिन एंटीबायोटिक खाना है, क्या क्या खाना है, तो हम बोर हो जाते हैं, राइट। तो थिंक फ्रॉम द पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे पिल फैटिग फॉर दम, वो लोग फैटिग हो जाते हैं, खा खा के सेम दवाई, बोर हो जाते हैं। सो वी कैन टेल देम द ऑल्टरनेटिव्स। देन पर्सनल मेडिसिन, व्हाट इज पर्सनल मेडिसिन? जैसे आप लोग सब रिलैक्सेशन के लिए कुछ कुछ करते होंगे, राइट। सबका अपनी एक सोच रहता है कि मेरा हेल्थ और वेलनेस के लिए व्हाट आई शुड डू। सो सिमिलरली द स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट आल्सो हैज समथिंग। तो हमको डिस्कस करना है कि आप क्या क्या कर रहे हो और हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं, ये सब पर्सनल मेडिसिन यूज करने के लिए। जैसे कीपिंग बिजी, एडवोकेसी, टाइम विद लाउड वंस, अगर उनका हॉबी है फिशिंग, मैथमेटिक्स, जैसे सर ने उनका एग्जाम्पल दिया, देन शॉपिंग, लाइक दैट। सो व्हाट डाइट चेंजेस नीड टू बी डन, ऐसे कुछ एक्टिविटीज में हम उनको इन्वॉल्व करके रखना है। हर पर्सन कुछ कुछ काम करता है, दैट इज नोन एज पर्सनल मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लिटरेचर। फ्यू रिसर्च स्टडीज आर देयर, मैं फास्ट बस बताऊंगी। जैसे नर्स लेड इंटरवेंशंस है, बहुत सारी स्टडीज पे देखा गया कि हाउ टू एडहर टू क्रॉनिक मेडिकेशंस, राइट। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया कंक्लूजन में, काउंसलिंग। So counseling is one important aspect by which you can improve the adherence. Second, there is another adherence therapy which was done by Richard Gray and group, जिसको मैंने आपको explain किया है. Then nurse-led screening linked brief psychoeducation. तो psychoeducation तो कर ही रहे हैं, उसके साथ वो screening भी कर रहे हैं, पेशेंट को साइड इफेक्ट है क्या, साइड इफेक्ट को मैनेज करने का भी है. So this is also an exclusive nurse-led screening linked brief psychoeducation, which was effective strategy for finding out adherence to antipsychotic medication. Then nurse-led telephone intervention. So patients को continuously 2 months तक फोन किया गया और एक ग्रुप को बिल्कुल कुछ फोन नहीं किया, रूटीन केयर ही दिया गया. So it was found that some of the interventions which were done. Then कम्युनिटी नर्सिंग सपोर्ट देने से ऑटोमेटिक, जैसे सर ने बताया, असर्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट. सो इसके कारण भी द पर्सन विल एडहर टू द ट्रीटमेंट रेजिमेन. देन सोशल स्किल ट्रेनिंग, ये भी बताया, जिसमें नर्सेस इन्वॉल्व हो सकती है, दे आर ट्रेन्ड इन दैट एरिया. देन आउटकम ऑफ दिस CBT, ब्रीफ CBT, एवरी नर्स शुड get training for that so that they can practice in the psychiatry. Then another is telephone based, one more study was done. Then socialization group activity therapy, which was done, that also improved the person's interaction ability.
दवाइयों इंटरेक्शन करने से तो दवाइयों के बारे में समझेगा, राइट? उनकी इंसाइट बढ़ेगी, राइट? So this therapy help to improve the interaction ability. So patient बात करने लगा, interact करने लगा, and they were able to take the treatment and stick to the therapeutic regimen. Then next is another research was done on emotion management nursing program for patients with schizophrenia. So इसमें भी ये पाया गया, it had positive influence on the emotional management because usually this is neglected. Emotions are usually neglected. दवाइयाँ देते हैं, बाकी सब करते हैं, but we neglect the emotions. So that also can be. So these were the few research studies. Sorry, I had taken a little more time. Conclusion. Clients with schizophrenia requires maintenance treatment with antipsychotic medication and psychosocial therapies to maintain symptom control. Rates of medication adherence, I told you, is low in clients with schizophrenia. This increases the risk of relapse and contributes to poor quality of life. So we as psychiatric nurses can collaborate with clients to improve adherence and other outcomes using shared decision-making techniques and tools that will empower and engage our clients to participate in their decisions about their treatment. So I will end by the quote, change your thoughts and you change the world. Everybody can change their thought and we can daily make our life world a better place to live. Thank you. These are the references. Thanks a lot. Any questions from the participant side? I think the children will be having hungry. Happy to see you. I'm very happy to see you both. Yes. Madam, same here, and it was such an enlightening session. I like some of the things because psychiatry is not my cup of tea. So, but I still enjoyed the session. I like this initiation, implementation, and persistence is required to make the client to adhere to the regimen, therapeutic regimen. That is something, and the pill fatigue, which you told, that really we see and we come across these things in our daily life. And it's really good, the ways which you have suggested, like alarming, signaling, and putting alarm and that type of things to keep us or the client reminding that you have to take the medicine. That is the key thing, keynote. And the last one, of course, change your thoughts and you can change the world. That is the key aspects, I feel. Yes, thank you. Thank you so much, ma'am, for such a knowledgeable session. I'm honored. The motto of keeping the theme like right from the disorder to treatment to psychotherapies and the nurse's role is truly fulfilled, as you all are giving the information from 3 other directions, but it is so continuous that we feel like you all prepared everything together. So thank you very much for taking accepting our invitation and giving such a wonderful session. Thank you so much. I'm honored. Yeah. God bless you all. We are honored by your presence, ma'am, and we are so delighted to see you on the chair of. Really, I'm very happy. I feel like I'm able to see you both in front. Thank you. Thank you to all the best wishes. Respected panelists. Now I request Mrs. Rebecca Jadhav, ma'am, EC member, NTAI, Principal Sumantai Basnik, Nagpur, to kindly propose the vote of thanks and conclude the session. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am, clearly audible. Okay. Reiterating the words of J.K. Chesterton, an English writer, philosopher, literary and art critic, I would maintain that thanks are the highest form of thought and that gratitude is happiness doubled by wonder. Honorable keynote speaker of the day, Dr. Bimla Kapoor Madam, Dr. Rupa Verma Madam, panelists, organizing committee members of this virtual panel discussion, moderator of the session, faculty and students, other guests and invitees, and all the participants. A pleasant day wishes to all. I take it as an honor to be asked to propose the vote of thanks on this occasion.
On behalf of the organizing team of the National Virtual Panel Discussion on Schizophrenia Spectrum Disorder on the World Schizophrenia Day, I would like to thank everyone who are present here and all who have worked in putting this workshop together. A heartfelt thanks to Dr. Bimla Kapoor, Chairperson, NNMC Bill, Senior Advisor, NTI, author, speaker, a wonderful teacher, mentor, and a great personality in the nursing field for gracing this occasion and presenting the keynote address. Your words of knowledge and motivation will be used to enhance our learning and practice and improve our skills in the field. A note of thanks to Dr. Rupa Verma, Principal, Sitabai Nargunkar College of Nursing for Women, Nagpur, State Secretary, NTAI Maharashtra, and Organizing Committee member for the invitation and for being part of the team and initiating the organization of such an enlightening event. A humble thanks to the panelists, Dr. Vikram Wankhede sir, Mr. Pankaj Vasetkar sir, and Dr. Binu madam for the meaningful discussion which brought to light many important aspects towards the management of care of persons with schizophrenia that would be remembered by our participants during their learning and practice. Thanks to Dr. Farooq Khan, Dr. Manish Kumar, Mr. Akshay Sadashiv, Ms. Vandana Goyer, and Mrs. Nancy Nomengo, along with Dr. Rupa Verma, have been instrumental in organizing the program for the benefit of the teachers and students. Thank you for the time and effort that was put in to organize and conduct this program. I acknowledge the contribution of Mrs. Vandana Tangvel for moderating the session and being able to highlight the speaker's notes to the participants. I thank the team behind the scenes, the faculty, office staff, technical staff, support staff, and the other members who have been working actively to allow us to enjoy a fruitful session. I would like to thank and extend my deepest gratitude to all the participants, not only for their presence here today, but also for considering to be part of this session. I hope that the experience would enrich their work and uplift their careers. In conclusion, I once again want to state that we are all most grateful to all our dignitaries on and off the stage. We thank you for being with us for this event. It has been a great pleasure. Thank you, one and all. Thank you so much. Rebecca for proposing vote of thanks. Rebecca madam ko bhi thanks for proposing vote of thanks. Yes, ma'am. Thank you very much. Congratulations to you, ma'am, for conducting such a wonderful session. Thank you. Now I request all the participants to kindly switch on their camera for photos. For a group photo, kindly switch on your cameras for a screenshot. Happy to have such an obedient participants. I'm taking screenshot. Kindly give a good smile. Kindly, please smile and keep smiling even after the session. Yes. Smile is infectious. Yeah, ma'am. I remember the quote written at JLN hospital at every ward, ma'am. Smile in pleasure, smile in pain, smile when sorrows pour like rain. Because the smile when others hurt your feeling, as the smile you have is very healing. I will always keep on keeping this in my mind and telling others also keep smiling because it's healing. That's it. Thank you so much, participants. Yes. Thank you I to hope all. everyone filled the feedback form and they will get the certificate right then. Right. Stay connected. Request to everyone. Stay connected and can be. Thank you.